humanity of people could be diverted to another place where their problems would be divorced. So that's the whole idea and context of this meeting, inshallah ta'ala. Maybe it's a good idea that I hand over the mic first to Dr. Rukshida, because that would be a good demonstration of how introductions could be done, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sahil Hotel. Rukshida is my first name. I'm a psychiatrist, born and raised in Bombay. So I'm born and raised in Bombay. I have Huzafa. He's a psychiatrist. He's my senior here. So उनके सामने मैं अपनी तारीफ तो वैसे भी नहीं कर सकती हूँ. But like a brother said that I should mention, I'm a TEDx speaker. So Alhamdulillah, I'm a TEDx speaker. I'm the senior most lady Muslim psychiatrist in India. For the longest ever, I was the only Muslim lady psychiatrist in Western India. And now Alhamdulillah we have quite a few, 2-3 more even in Bombay. So because of that I've always worked with Muslim women quite a lot. I'm attached to Millat Hospital at Jogeshwari. I go to Prafulta, those are my charity setups, well subsidized setups. And otherwise I'm in private practice in Lokhandwala. Assalamu alaikum. My name is Aslam Khan. I'm an entrepreneur and a technologist. इसका presentation में I'll basically give my speech, and which I'll bore you like my introduction. Assalamu alaikum. My name is Shabir. I stay in Nerul. So by profession I am into IT, and by passion I am a life coach, studied from Symbiosis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arafat Sheikh. I am a business owner and entrepreneur. I am into the manufacturing business of portable containerized homes, containerized restaurants, containerized offices. Okay. My name is Abdul Wahid Paperwala. I've studied engineering and interior designing, so I started my career into interior designing and spent around 20-25 years in interiors. So some of my pride projects were and are for this Islamic Research Foundation, IRF, and after that I moved into manufacturing and I got into this design and build of into concrete products called GRC. Hazrat Sheikh. Academically, I'm an engineer, but professionally, I delve more into the physical fitness aspects of human being, more so personality management. I try to work in the spheres of Islamic education in the sense I don't follow the conventional tablighi methods, but I do love to wean people away from the modern asbab through modern talks into the Islamic fold. More so ever, people who have not been anywhere near the Islamic field, I try to work on them through modern science, through whatever I understand of the Quran and the Hadith. I like to emphasize more on the physical fitness as well as the mental well-being of a person. That's where I work more on. I'm Hina Fatima Syed. I'm professionally working as assistant professor in Mumbai University in the Department of Arabic Literature and Islamic Studies. I'm completing my thesis. Inshallah, I'm going to submit it in the end of this month. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Anika Sheikh. I'm a dentist at St. George's Hospital. I have attended quite few workshops of Discover Yourself, and Alhamdulillah, myself I've taken few short sessions in various schools, and I'm very passionate about working for this community, and I'm looking forward for it. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Masira Salkar. I live in Bangalore and I teach psychology at an Islamic college and also take weekend classes for students where we teach basic foundations of Islam and the tenets of Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Farzeen Chaudhary. I am a mother of 4. Alhamdulillah, I'm also fostering a newborn orphan baby. I run schools across, 2 schools across the country. We have a family trust under which the schools run. The intention of the school is not, of running the schools are not commercial interest, but to provide communities with, good school 7-star facilities at a very minimal cost. Assalamu alaikum. I'm Banu Ismail. I'm a psychologist, a child analyst and a psychoanalyst.
I'm associated with an NGO, that PGRC, which works for mental health. I have my own private practice, and I'm also a faculty in the training of psychoanalysis. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Nikhat Khadija, and basically I'm a social worker. Assalamu alaikum. My name is Sabah Abdul Wahid. I'm a homemaker, and I go for regular word-to-word Arabic, word-to-word Quran classes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Khadija, I'm a food technologist and a motivational speaker. I have done my NLP and counseling, and at present I'm doing life coaching from Symbiosis. That's it. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Zabeen. I'm basically a homeopath, but I'm not into practice. I have worked with an NGO for the underprivileged, wherein delivering medical aid for the same. I've been a student of Talim-e-Deen, wherein we have learned Quran word for word, Alhamdulillah. I've attended a couple of workshops of DYS, and inshallah looking forward to attend the trainers training at Bangalore of the same. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shajar Sayed. I'm the Ayurvedic physician and cosmetologist, and I did my certificate course in addiction medicines, and I have my practice in Mumbai and Nerul. Assalamu alaikum. I'm Tarana Mohammadi. I'm currently pursuing entrepreneurship, but I'm also a freelance dietitian and a homemaker. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabana Patel here. I strongly believe in seeking knowledge from cradle to grave. So, academically, I'm an MBA. I've done software engineering, food and nutrition. Like I said, seek knowledge, Alhamdulillah. Assalamu alaikum. My name is Madina Mullah, and I'm a homemaker. Assalamu alaikum. I'm Nosheen Saulka, and I'm a civil engineer by profession. I take up freelancing and much into construction. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Samina. I have done my master's in counseling psychology. I work in an NGO as a senior manager, and we are based in Tata Memorial Hospital in Mumbai. Assalamu alaikum. I'm Advocate Huria Patel. Apart from documentation, I'm specializing in Muslim personal law. Assalamu alaikum. I'm Tarana Qazi, wife of Mufti Ashfaq Qazi. I did Alema from Jamia Banat Mumbai, and right now I'm teaching in Kurla in Rabbania school. Assalamu alaikum. I'm Dr. Huzaifa Bindarwala. I'm a psychiatrist practicing at Saifi Hospital, Prince Ali Khan Hospital, and Global Hospitals. I'm also an author of 2 books on speed reading, and I encourage people to read. Assalamu alaikum. I'm Abbas, and I am responsible for running a restaurant, Gloria Restaurant. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Khalid Sheikh, basically a software professional. I run a startup company which is Artos Tech Private Limited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Sirajuddin Choble, Principal Maharashtra College. I think so that's sufficient. Professor Haji Kalania, General Secretary, Maharashtra College. Assalamu alaikum. My name is Ashfaq Mohammadi. I am a travel consultant and Umrah tour package specialist. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Advocate Mubin Solkar. I am a lawyer by profession. I practice in the Mumbai High Court since past about 17 to 18 years, and I specialize in criminal law. Especially, I deal with more of terror-related cases, and yes, we do a lot of community service in terms of providing legal aid to the needy litigants, especially accused persons who are in custody for several decades and are unable to afford the kind of litigation costs that are presently prevailing. Besides that, I'm also an ex-member of the Maharashtra State Waqf Board, which is a statutory body constituted by the government of Maharashtra, which deals with waqfs in the state of Maharashtra. And I'm also the president of Impact. It's an NGO known as Initiative for Maintenance of Peace, Compassion and Community Togetherness, which strives to maintain peace and communal harmony amongst
various communities where we work together for social and educational causes. And I'm also an executive member of a minority institute known as Sai Education Society, which runs a school and a junior college at Village Sai in Raigad district in Konkan area, which is one of the oldest institutes for Urdu medium school and a junior college for the children of the villages. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Motasim Solkar. I am a pediatrician by profession and I am practicing for the last 20 years in South Bombay. I am attached to various hospitals in South Bombay, Saifi Hospital, SRCC, Masina and Noor Hospital. Besides being a pediatrician, I do a lot of social work in my area. I try my best to do whatever I can do for people and work for a good cause whenever possible. As my younger brother Mubin has just said, we've been running this school at Sai, a junior college and school. I am also closely associated with it, and I would love to give it my inputs, and whenever required, I would love to help out in whatever way I can. Jazakallah khair. For the past 25 years, we've been running this organization which deals in Sharia compliant investments. I'm also a public speaker in Dawah and Islamic banking, Islamic finance, and I have been involved with several organizations actually, but lastly I was involved with Al Kauthar Institute and Mercy Mission, which was basically social work with a slight difference. Al Kauthar was about getting knowledge over weekend courses. So more about that maybe sometimes in the future. Those activities are not happening in India under the present circumstances, but inshallah we are striving to get that kind of work back over here. So with those words, quickly, Aslam bhai, the floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि when it comes to my turn to introduce, inshallah I can spend some time with the permission of our visionary and the founder of this institute. So my name is Aslam Khan. I'm an entrepreneur. I basically lived in Japan for 2 years and in US for 8 years. Came back to India in 2006. I started my IT company, which got listed last year to Bombay Stock Exchange. And now, Alhamdulillah, people are watching the stock. It's performing good. Apart from the IT company, I've been a serial entrepreneur in the last 6. Apart from the entrepreneurship, I'm also into a strong believer of social entrepreneurship. And even within the entrepreneurship, any business, if you are starting, I'm a strong believer that apart from the economic contribution, any initiative, any business, it should also contribute. In 2010, I also founded an NGO with a couple of friends here. And with that NGO, we are working on certain highly impactful work. Our project is like creating the employment for the blind in the IT industry. The blind who was getting around 2,000 rupees salary a month, we worked on a project where we enabled them to earn from 2,000 to 40,000 rupees a month. That was our project. We also were actively working on the autistic children, where we have started a setup in Ghatkopar area. Apart from the school, our motive is to how do we automate the process of their therapy, and for that we have worked with the IIT Bombay to invent a machine which is inshallah going to be released in this year. So let me not spend too much time because this 2 months back I traveled with our Prime Minister because of my association in NASCOM. So थोड़ी सी आदत लग जाएगी ना बोलने की उनकी तरह तो difficult हो जाएगा, right? So let me come with the subject. अच्छा मैं ये counseling is not my area. I'm into IT. When Mufti Saab met with one of my acquaintances from US, जब वो दोबारा आए, he was very impressed with his ideology and his thought process. तो कहने लगे भाई असलम आपके दोस्त कहाँ हैं?
जो यंग से थे, डायनेमिक से थे जो है ना, ऐसे यंग डायनेमिक तो काफ़ी दोस्त होते हैं हमारे। नहीं, वो एक बड़ी पॉपुलर मस्जिद के हेड हैं जो है ना, तो पॉपुलर मस्जिद तो भी काफ़ी है। नहीं, वो शेख जो है ना, जो डाइवर्स कराते हैं लोगों की जो है ना, डाइवर्स कराते हैं। एंड देन आई ट्राई टू मैप यू, ही वाज टॉकिंग अबाउट मुफ्ती अशफाक साहब, एंड देन आई शेयर्ड विद हिम कि भैया आपको लोग इस तरह से जानते हैं जो है, ठीक है। So maybe I think while he was working on the counseling idea कि भाई निकाह कराना है, निकाह भी कराते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, ठीक है, राइट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये भी एक रीज़न होगा इनका कि आइडेंटिटी को चेंज करना है, फ्रॉम डाइवर्स कराने वाले से कुछ और। तो ये काउंसलिंग की जो बात आई, उस वक्त जब शरिया ऑडिट चल रही थी हमारी कंपनी की, that time Mufti Sahab was talking about his own initiative, and I was very much impressed as a strong believer of entrepreneurship and a social entrepreneurship कि भाई हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर, वो भी इस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हट के सोच रहे हैं। वरना जहाँ तक मैंने देखा है कि सिवाय मेंबर के और कहीं देखा भी नहीं मैंने जो है ना, बात करते हुए लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव थी। और इस फेज से जो मैंने बताया कि 2 साल में जब टोक्यो में रहा और 8 साल जो है यूएस में था, तो कुछ ऐसे तजुर्बात हुए विच आई फेल्ट की इज अ नीड ऑफ दिस कम्युनिटी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम यूएस में थे तो उस वक्त क्या, इट वाज अराउंड 97 टाइम फ्रेम जो है, ठीक है, कि काफ़ी लोग यहाँ से जो है ना, दे वेंट टू यूएस, गॉट देयर जॉब, फिर शादी यहाँ कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज अ सेकेंड जनरेशन जो है ना, शादी करके जो यहाँ से जब आप यूएस में काम कर रहे होते हैं, यू आर वर्किंग इन US, having a good house, like it's easy to buy a house in US, right? तो शादियाँ भी यहाँ अच्छी होती हैं, right? You get a very good proposal, like लड़कियाँ एडवोकेट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जो प्रॉब्लम हमने देखा कि इट्स अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो आप भले गायनोकोलॉजिस्ट हो, आप एडवोकेट हो, आप PhD हो, बट यू आर सिटिंग एट होम, ठीक है। तो इनिशियल टाइम फ्रेम जो होता है कि ठीक है 6 महीना 8 महीना शादी के बाद में इट्स ओके, आई मीन इट्स अ गुड लाइफ। उसके बाद में जो है जो देखने में आता था कि भाई ऑल डिस्प्यूट्स हैपनिंग, लाइक यू नो कि भाई आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, आई एम अ एडवोकेट, आई एम सिटिंग एट होम, तो भाई कुछ और कर ही नहीं सकते आप। तो जो प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी कि उसके बाद में फिर जब डिस्प्यूट हो रहा है तो एज अ मुस्लिम आपके पास में मस्जिद है और शेख है, आप वहाँ भागते अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो है ना कि भाई नाउ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन था, एंड ऑफ कोर्स दैट टाइम वी वर अनमैरिड। और फिर जब दूसरी चीज देखने में आई कि जब वहां पर आप जब लेडी जब प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, जब एक माँ बनने वाले होते हैं, तो वहां का जो एक कल्चर है कि 3 महीने के बाद आफ्टर द प्रेगनेंसी बच्चा होने वाला है 6 महीने में, तो आप एक माँ बनने वाले हैं, एक बाप बनने वाले हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी है। तो एवरी वीक देयर इज अ क्लास व्हिच इज मैंडेटरी एंड कवर्ड इन द इंश्योरेंस कि आपको वो अटेंड करना है कि आप बाप बनने वाले, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे को पैम्पर कैसे करना, उसका डायपर कैसे चेंज करना, अगर वो रात में रो रहा है तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई। तो इसकी प्रिपरेशन आप 6 महीना पहले से ही कर रहे हैं, आप एक बाप बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि भाई आपको एक अच्छी कोचिंग दी जा रही है पेरेंट बनने के पहले। लेकिन जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप शादी होकर वहां गए, 6-8 महीने तो बड़ी खुशी से गुजरे, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर एक बात हम देखें, इंडस्ट्री में हम रहते हैं, आउट ऑफ 168 आवर्स इन अ वीक 40 आवर्स हम काम करते हैं अपने जॉब के लिए, 40 आवर्स काम करते हैं। उस 40 आवर्स काम करने के लिए हमने पढ़ाई की होती, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, 16 साल 18 साल पढ़ाई करके फिर हम 40 घंटे के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो बाकी के 128 आवर्स हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं शादी के बाद में, उसके लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है। जब मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि बच्चा होने के लिए 6 महीने तक हम काफी प्रिपेयर कर रहे हैं, एवरी वीक वी आर गोइंग फॉर अ क्लास टू अंडरस्टैंड। और ये जो बात हो रहा है कि शादी के पहले आज हमारा रोल चेंज हो रहा है, एक भाई थे अब शौहर बनने वाले हैं, लड़की एक बहन है, बेटी है, अब एक बहू बनने वाली है, उसकी प्रिपरेशन क्या हो रही है। आज यहाँ जब हम देखते हैं वी हैव क्रॉस 40s, नाउ वी आर सीइंग आवर नीसेस, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है कि भाई ठीक है कॉलेज जा रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, और जैसे ही फाइनल ईयर में होते हैं तो हमारी फिक्र पड़ जाती है कि रिश्ता तलाश करना है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, कोई यूएस में हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो। तो पढ़ाई जो हो रही है
उसके बाद में अचानक शादी हो जाती है, शादी हो गई 6 महीना 8 महीने नॉवेल्टी पीरियड में है, उसके बाद में सारे डिस्प्यूट। तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है? जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 40 घंटे हफ्ते में कमाने के लिए आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, लेकिन जो बाकी 128 आवर्स जो आपको अपनी फैमिली लाइफ में गुजारना है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है? हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ टू बी अ गुड वाइफ, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। आज हम देख रहे हैं खुद फैमिली में बिल्कुल यही हाल हो रहा है। तो वी कैन विजुअलाइज कि आगे चल के क्या होने वाला शादी के बाद में उनकी। तो इस सिलसिले में जो हमारी मुफ्ती से बात हो रही थी, तो ऑलरेडी ही वाज वर्किंग ऑन दिस आइडिया, जिनका एक्सपीरियंस था जामा मस्जिद में कि भाई ऐसे से हो रहा, तो क्यों ना हम प्रिवेंटिव, जैसे हेल्थ केयर में आई डोंट नो हॉस्पिटल ऑल्सो, तो हम हॉस्पिटल चलाते हैं इसलिए कि आप बीमार हो तब आओ, एंड देन उसके बाद में हम पैसे बनाए, राइट? कि हॉस्पिटल का जो सेटअप है वो ये कि भाई प्रिवेंटिव नहीं है, ठीक है, ये आफ्टर डिजीजेस है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव हम करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये जो काउंसलिंग का पार्ट जब मैंने बताया कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हम इस तरह की चीजें करें कि जहां पर लोग जो है प्रिपेयर हो उस 128 आवर्स के लिए वीक में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि भाई आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, बिकॉज दिस इज द राइट नाउ नीड ऑफ आवर कम्युनिटी एंड दिस इज द नीड ऑफ आवर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी शुरू हुई माशाल्लाह जो है, आज शेख के यहाँ रहने पे इसकी फर्स्ट सेशन जो इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ एक बैकग्राउंड देना चाह रहा था, और इसी को जो है एज इंट्रोडक्शन कुछ हमारे सामने स्लाइड डेक बनाया है, तो वील जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड डेक, है ना। तो अब जब हमने बताया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है शादी के पहले शादी के बाद जो है, ये मेंटल जो पीस होता है ना, उसको पूरा झिझोड़ के रख देती है, राइट? ठीक है। तो मुफ्ती अशफाक साहब का जो एक विजन था कि भाई वी शुड हेल्प बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट आवर डिस्कशन ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कि वी शुड हेल्प आवर कम्युनिटी, आवर पीपल टू लिव देयर लाइफ पीसफुली, राइट? एंड तो आई थिंक एज अ विजन होल्डर, a vision was formed to take this entity, to take this organization to the next level, and a team, we will discuss about the team which was formed to take this initiative ahead. इसमें काउंसलिंग का तो एक मैंने आपको नीड बताया। सेकेंडली, it's not only just a financial advisory services, I think we'll talk about. So the जो initiative है Family First का, it has 3 different pillars. Number 1 is a counseling, and we'll talk about more into what this counseling means and what kind of offering and services the team is going to provide under this pillar of the counseling services. Second is about this financial advisory services, or just advisory services I can say. And in this I'll take one example of wasiyat, inheritance. एक दफा का वाकया है कि हमारे अंकल आके बैठे हुए थे, बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे थे। क्या हो गया भाई? तो लास्ट वीक ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, ही एक्सपायर्ड। और उनका जो अपसेट होने का रीजन ये नहीं था कि मतलब ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि यार हमारे दोस्त थे, उनके पास में कुछ कुरला के इलाके में 8-10 दुकानें हैं जिसमें काफी रेंट आ रहे थे। ही हैड 2 sons and 1 daughter। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो बच्चों ने ये करने के बजाय कि कुछ उनके आखिरत का सोचें, फौरन बैठ के डिस्कस करने लगे भाई कि अच्छा ये जो 8 दुकानें हैं कैसे बटेंगी, रोड की दुकान कौन लेगा, अंदर की दुकान कौन लेगा, वहां की जायदाद कौन लेगी, बहन का क्या लेगा जो है। तो ये अंकल वाज वेरी अपसेट कि भाई ये क्या है, मतलब ये है ना। इत्तेफाक से अंकल की भी वही मतलब हाल है कि उनकी भी 8-10 दुकानें हैं, 2 बच्चे हैं। एंड माय पॉइंट वाज कि भाई आपके साथ में भी यही होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी की आपने? आप कह रहे हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए था कि भाई कुछ तो आखिरत के लिए सोचना चाहिए उनके। भाई बच्चों को 8 दुकानें मिली, वो बांटने के चक्कर में पड़ गए। तरबियत की बात अलग है, लेकिन क्या सब मैकेनिज्म है? जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो ऐसी कुछ मैंने इज गुड टू बी इन टच विद द स्कॉलर्स, राइट? तो कुछ मुफ्ती साहब से सीखे थे, तो बताया गया कि भाई अगर आपने अपनी वसीयत बनाई है, वसीयत तो नहीं बनाया। अब वसीयत हमारे यहाँ तो खैर माशाल्लाह लॉयर्स भी हैं बैठे हुए जो है ना, तो वसीयत अगर होती है उनके पास, या आप अगर बनाए वसीयत को और उसमें अगर ये कहते हैं कि भाई ये 8 दुकानों में से एक दुकान हम मतलब जो है ये करते हैं कि हमारे मरने के बाद में ये वक्फ हो जाए, जो भी है, तो अच्छी मतलब बच्चों को करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करें? तो कौन से लॉयर हैं भाई? हमारे सोलकर साहब हैं। बट मेरे ख्याल से इन सब की भी जरूरत जो है, जहाँ पर शरई ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कन्वेंशनल लॉयर्स सिटिंग हियर, कि मेरे ख्याल से जहाँ पर ये शरिया की बात आती है, आई थिंक द बेस्ट प्लेस इज फ्रॉम द स्कॉलर, द रिलीजियस स्कॉलर्स, कि ये लोग बराबर गाइड कर सकते हैं। इनके पास में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। भाई हम तो बता दिए कि आप अपनी वसीयत लिख दें,
अच्छा बता के चलते बने, यही हम करते हैं, एडवाइस देना सबसे फ्री काम होता है, लेकिन वो है कहाँ, वसीयत के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो ये भी एक था कि ये भी एक उम्मत का एक पेन है, यहाँ पर भी काफ़ी तकलीफ है हमारी उम्मत है, ठीक है। आज अगर पता नहीं, एक बार तो मैंने अपने ऑफिस में इस तरह से बात करते हुए पूछा कि हाउ मेनी ऑफ अस हैव प्रिपेयर्ड आवर वसिया। एक शायद कुछ हदीस भी है कि जिसके पास में वसीयत के लिए कुछ होना चाहिए तो वो वसीयत करके सोए या 3 दिन तक नहीं सो सकता, ऐसा कुछ हदीस है शायद, राइट? एम आई राइट शिफ्ट, राइट? तो माशाल्लाह, लाइक यू नो एवरीबॉडी इज हैविंग गुड, अपना खुद का बॉम्बे में फ्लैट है, फैमिलीज हैं, तो क्या हमने अपनी वसीयत बनाई है? एटलीस्ट मैंने वसीयत का एक प्रिंट आउट मुफ्ती साहब को दिखाया था, यूएस से मंगाया था, और मैं हमेशा वो प्रिंट आउट को लेकर अपने वालिद साहब के पास जाता हूँ, एंड ही गेट्स स्कैर्ड। अच्छा वसीयत बनाना है, क्योंकि द मोमेंट आप वसीयत लिखना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट रिमेंबरिंग योर डेथ एंड एवरीथिंग, आप उसको विजुलाइज करना होता है ना, और समहाउ मतलब हमें अपनी मौत को नहीं याद करना है। दिस इज द ट्रेंड आई एम सीइंग, है ना, मतलब कि भाई वसीयत दूर हो जाती। तो एक ये था कि अगर जो ये सेंटर बन रहा है, पहले तो हम काउंसलिंग पे ध्यान दें, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज विल टॉक अबाउट दैट, उसके बाद में इस तरह की भी सर्विसेज अगर हम हैंडल करते हैं जो कि एक उम्मत की काफी दर्द है, अगर उस दर्द को हम सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड इनिशिएटिव। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हलाल कंसल्टेंसी एंड द रिसर्च। आज की तारीख में हम हर एक को हमें हलाल खाना होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वाकई हलाल है कि नहीं है। तो उसमें भी ये था कि अगर हम इस ऑफरिंग को भी ऐड करें तो ओवरऑल कंबाइनिंग ऑल दिस 3 सेक्शन, तीनों पिलर को मिलाकर काउंसलिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड हलाल कंसल्टेंसी से एक काफी बड़ा जो प्रॉब्लम है उम्मत का सॉल्व हो सकता है। अब काउंसलिंग में यू कैन सी हियर लाइक ना कि प्री एंड पोस्ट मैरिज। प्री मैरिज के बारे में मैंने बताया कि I'm a strong believer कि भाई जो नौजवान हैं शादी के पहले जो एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई क्या लोगों के हुकूक हैं, किस तरह से उन्हें आगे की जिंदगी गुजारना है, अगर उसकी इस लाइक अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है ना, कि अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें प्री मैरिज के ऊपर, और पोस्ट मैरिज तो खैर वो तो आफ्टर डिजीज आ गए हैं, वो करना है। फैमिली डिस्प्यूट्स, पेरेंट्स एंड आई थिंक मुफ्ती साहब एज इज रोल इन राइट नाउ जामा मस्जिद ये सब काम कर ही रहे हैं जैसे अशरफ ने बताया, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से एक एंटिटी बनाकर, ठीक है ना, कि खैरात के तौर पे, ठीक है, इसे इस काम को करना है, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि फैमिली फर्स्ट काउंसलिंग सेंटर जो है। तो काउंसलिंग एडवाइजरी सर्विसेज जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि डॉक्यूमेंटेशन, इनहेरिटेंस, ज़कात कैलकुलेशन, टैक्स प्लानिंग में शरिया टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट आई थिंक ट्राइंग टू सेव द ज़कात एंड ऑल, राइट। एंड देन हलाल रिसर्च। आज अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे फ्लाइट से, अगर आप देखें तो देयर इज अ मुस्लिम मील एंड अ डायबिटिक मील। लास्ट टाइम मैंने जब ट्रैवल किया तो मैंने ये कहा कि आई नीड डायबिटिक मुस्लिम मील। नाउ दे वर कंफ्यूज कि डायबिटिक मुस्लिम मील क्या होता है जो है ना, राइट, क्योंकि नॉर्मली अगर आप डायबिटिक मील मानते हैं तो इससे हलाल और नॉन हलाल यू डोंट नो, व्हेन यू से हलाल सो यू गेट मिक्स ऑफ ऑल डायबिटिक मील। तो डायबिटिक हलाल का कांसेप्ट अभी तक जो है they are still confused. I think they should be the first client to, और ये स्टैटिस्टिक्स जो बता रही है वो कि भाई क्यों ये करना है। So there are so many cases disputes in the court right now and divorce is happening. One of the statistics which I am told not to share, जो मैंने देखा था कि भाई यूएस का जो मैंने पढ़ा था कि 30%, क्योंकि जो सारे जो हम मुस्लिम्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर इमिग्रेंट, जो मैंने केस बताया कि भाई वहाँ गए, यहाँ से एक ड्रीम लेकर जाते हैं, बाद में फिर 6-8 महीने बाद हकीकत सामने आती है एंड दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप, ठीक है। तो व्हाट आई हैव सीन कि यूएस में जो 31% जो है मुस्लिम कम्युनिटी में डाइवोर्स रेट पाया जा रहा है, यहाँ पर वो रेट नहीं दिख रहा है। आई थिंक 155% द ग्रोथ रेट दे आर टॉकिंग अबाउट। और इस चीज के लिए फिलहाल द ओनली वे इज अ कन्वेंशनल वे, आइदर मुफ्तीज एंड स्कॉलर्स आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और समटाइम्स द लॉयर्स आर सिटिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, राइट। सो इसके लिए था कि भाई इस जो नीड है इसके लिए हम अपना एक सेटअप बनाएं, एक स्ट्रक्चर को बनाया जाए जिसके थ्रू ये काउंसलिंग, हलाल और एडवाइजरी सर्विसेज की जाए। अब काउंसलिंग के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स? वन इज 1-to-1 काउंसलिंग इन द मोबाइल बेस्ड सर्विसेज, और ये जो चीज है यहाँ पर शायद नाउ यू कैन लिंक दैट व्हाई आई एम अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ द स्टेक होल्डर, कि भाई हम भी तो उसी में बेनिफिशियरी में है कि जब ये सेटअप शुरू होगा तो वी विल आल्सो लेवरेज दिस सेटअप इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट। साथ में जो मोबाइल ऐप का है कि भाई एज अ आईटी कंपनी, एज आईटी एक्सपर्ट आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस। और ये बड़ा मुझे एक जब बात चल रही थी कि मोबाइल बेस्ड सर्विसेज, एक बार मुफ्ती साहब ने कहा था कि भाई ओला एंड उबर को अवार्ड देना चाहिए आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नाउ यूजिंग द ओला उबर
instead of owning the driver. One of the things जो मैंने वहाँ पेन देखा कि अगर आप खुद का ड्राइवर रखते हैं, एक ड्राइवर आपका है, ठीक है, वो हमेशा आपका कार ड्राइव करता है, ठीक है. After 3-4 months I realized he knows everything. I mean he's giving me the thing. सर वो अपॉइंटमेंट आपका है जो है ना, आपने बोला था किसी को उस टाइम पे जाना है, तो so carefully he is listening. तो I started feeling जो है ना कि भाई ये मेरे बारे में इतना सारा जानता है. I don't want like I was feeling uncomfortable जो है एक ही के पास जा जाकर. तो मोबाइल का जो ये आया कि भाई आज का जमाना एग्रीगेटर का जमाना है, ठीक है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम एक ही मुफ्ती के पास में लेके गए तो मुफ्ती बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ जो है ना, वो सारे आपके भेज जो है उन्हीं के पास में है. तो एक टाइम आता है कि आप यू विल स्टार्ट फीलिंग रियल ऑकवर्ड जो है ना कि भाई सब कुछ हम इन्हीं के पास जा रहे हैं. तो हाउ अबाउट लाइक यू नो अगर आप एक एग्रीगेटर बनाए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे काउंसलर को आप मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए. मे बी लाइक यू नो आई थिंक व्हेन द इंट्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन वी गॉट टू हियर लाइक यू नो एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट कि कल को अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकते, somebody sitting in Nerul, but let's say I'm sitting in the South Bombay and I need the services of that psychologist, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल ऐप के जरिए, एग्रीगेटर के जरिए हम वो काउंसलिंग सर्विसेज हासिल कर सकते हैं. तो that will be a high-tech counseling services in this setup. And then I think the plan is to for the bachelors, the people who are going to get married, उनके लिए जो प्लान है कि भाई 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के सेमिनार किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई उनके roles, उनके responsibilities, the expectation after they get married. ठीक है, I think this is just more detail about the same thing what I just spoke. And the team here, like you know, under the leadership of Mufti Ashfaq, Mufti Yahya Sahab is here, who is involved in this particular initiative. Aziz Sahab is sitting at the back, standing at the back. आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? Well, I'm from the firefighting background. Firefighting background. Yeah, so my job is to save people from fire. MashaAllah. Your job, you say about your Islamic financial. Okay, I have also done Islamic finance from Africa Institute. So I have a background of Islamic finance also. And about Al-Kawthar? Al-Kawthar is? ठीक है. And then myself, and then we do plan to have an advisory board, the mentor board, and the structure of the team. Jazakallah khair, thank you very much. Right, so the whole idea of having Maulana Ibrahim Bham be over here for this event is that he runs an organization called Careline in South Africa, which is essentially an Islamic, is it an Islamic helpline, or maybe we can talk about it during the talk. So there are a lot of synergies that we are working with on all the fronts, all the 3 areas with Maulana Ibrahim Bham. So inshallah he will throw some more light on how does he work in South Africa, and then we'll have an open session where all of you can contribute and give in your suggestion in context of something like this in India. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ala man la nabiyya ba'dahu, wa la ummata ba'da ummatihi, wa la kitaba ba'da kitabihi, wa la shari'ata ba'da shari'atihi. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Respected ulama, Mufti Ashfaq Sahab, other scholars and eminent brothers and sisters, let me first put on record our thanks to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to gather here with the intention of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala and with the intention of the benefit of the ummah. We thank Allah ta'ala for all His favors, and knowing fully well that we can never do enough to thank Allah ta'ala for all His favors. Allah says in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you try and count the favors of Allah, you would be unable to do so. We send salutations upon our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, through whom we have received Allah's message. And not only received Allah's message, he was the perfect example who showed us in practical terms how to live Allah's message. It is a great pleasure for me. I am a person, together with some of the responsibilities that have come upon me, although I am not worthy of it, I am a person who loves interaction. And while people were discussing some of the
the introductions. And this reminds me, in fact, I would like to keep this very short because the reason is I think we also need to have some interaction. I don't think people like to hear too much talks. After a while, you get tired of talks. But while people were doing the introductions, reminds me of a slightly humorous incident. They say it happened here in India, that a person one day on a very cold morning went out in one of the rural areas of India looking for accommodation. And it was a very, very cold morning. I don't know which place in India is very cold. Kashmir, Bihar, whatever. And he went around somewhere and he found one place, and wherever he went, the hotels were closed and there was no availability of accommodation, and he came to one place and that person had one small room available, but he first asked him, he said, who is it that I must book the accommodation for? So even on that particular occasion, although Mufti Ashfaq said you mustn't make kanjusi, so he started making his whole introduction. Hazrat Maulana Allama Qutbul Aqtab Muhyi Sunnah Qamiul Bidah. The person said, itne logon ke liye jagah nahi hai. So I will keep that in mind, but I think we all need, and in fact while you are making mention of some of the people, I already picked up things that are of interest to me, and I would like to interact with the people. Later on someone spoke about the Jummah Khutbah. I just completed a small booklet which I brought a whole stack of to be able to share with people on how to prepare your Jummah bayans. And I'm very interested with regard to the speed reading, and I'm also very interested in people calling themselves homemakers. And anyone who has read about Khalid Beg has written about this one beautiful passage when he said, the society that belittles homemaking loses the home. And that is one of the reasons that has happened today. We have belittled our homemakers, we have belittled our women, and that is the reason why we are losing our homes. So, very, very interesting to see the type of people that we have in this gathering. Just let me give a small introduction before I come to the main point in sharing some of the activities, because part of what I'm doing, many of the things that have been discussed, somehow or the other I'm attached to many of the things in South Africa as the Secretary General of the Jamiat Ulema in South Africa. We all know we are gathered here on the basis of our deen. Now our deen is unique. It's not something that has been put forward to us as a trial and error of human experience. Allah Ta'ala in the Holy Quran says, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. I have completed my favors upon you. I have completed all my favors and my ni'mats upon you, and I have liked and I have chosen Islam as a way of life for you. Islam is not something that has been given to us that is based on a process of trial and error of human experience. It has been chosen for us by none other than our Creator, who said, I am happy and I am pleased with Islam as your religion. And for us, that is the ultimate. And may Allah subhanahu wa ta'ala forbid that we ever have a situation where we are devoid of Islam. There is absolutely nothing left in our life if we do not have Islam. We can have everything else, and if we do not have Islam, we have nothing. And if ever we have a situation, we have less of other things, but we have Islam, inshallah, we will have something to take, and we will have confidence when we go in the next life, as the brother had made mention. And of course, it is something that we always got to keep in mind. Everyone knows the incident of Musa and Khizr. And of course, one part always is absolutely amazing, is that when Khizr, remember Khizr was someone who understood certain aspects of the unseen that was given to him by Allah, so he worked on that premise. Musa alayhi salatu wasalam was someone who worked on the Sharia, and he had to work on something that is in front of him. So when Khizr killed a young child, Musa alayhi salatu wasalam naturally reacted, how can you do something? أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. You have killed an innocent child, which is the height of wrongdoing. You have done something that is very, very wrong. So in reply to that, Khizr gave an answer, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. And what was his answer? He said, Allah had shown me that this child was very beloved to its parents, but was going to be growing up rebellious and away from Iman and away from Islam. And given the love the parents had for the child, there was a fear that in that love for him, they would also become rebellious and lose their Iman. So in other words, what was it? Khizr took the life of a child who was going to become the means of the temptation of the Iman of his parents. Khizr took the life of a child who was going to become a temptation in the life of his parents. That in that, your child is not even as important as your Iman. That Khizr took away the child that was going to become a temptation for the Iman of children, Iman of the parents. So this is our Iman, our Islam. However, bear in mind, and many a times people always say with regard to Islam, and we hear this many a times, sometimes from people who are not closely understanding Islam, the people say Islam is outdated. Islam is not something that we can practice in the 21st century. And I normally reply to that with one beautiful sentence. Since when was Islam dated for it to be outdated? Since when was Islam dated for it to be outdated? So many times people say Islam is outdated. So I ask, do you know any commands of Allah Ta'ala that had come with a date, that this is only prescribed and only applicable up till 2000? I don't know any command of Allah Ta'ala. So no command of Allah Ta'ala is dated for it to be outdated. And many a times people say, we need to revive Islam or revise Islam and reform Islam. So I normally say you reform something that has been deformed. Since when is Islam deformed for it to be reformed? What are you talking about reformation of Islam? It's a misnomer. So this aspect of Islam being outdated is a misnomer because Islam was not dated for it to be outdated. The aspect of Islam to be reformed is also a misnomer because Islam was never deformed for it to be reformed. Yes, what we do have is a situation where we will remain true to the principles of Islam, but however there would be a different approach according to the needs and necessity of the time that we are living in. The principles will be there, there will be a difference in the methodology in how you deal with those particular problems. And this has been something that has always been in our ummah. When there was a need, we understood the need and the community did something that was relevant for the need. And I can give examples throughout Islamic history. So when in the battle against Musaylama Kadhab, when there was a great amount of huffaz that was martyred and shaheed, Umar radiallahu anhu came to Abu Bakr and said, Amirul Mu'mineen, we have to bring the Quran in a written form, in a book form. We have to write it, we have to preserve it. Abu Bakr said, I'm not going to do something that the Nabi of Allah didn't do. Are you asking me to do something that the Nabi of Allah didn't do? I'm not prepared to do it. But when Umar insisted and Abu Bakr saw the need, they put the Quran in a book form. So when initially it was mooted, the people were not, Abu Bakr was not ready to accept it. But when he saw the need, he did it. And today for us to have a printed version in our Quran, we don't see anything wrong in it. Every house has got several Qurans. Whether they read it according to it is a different matter. But everyone has got a printed version. But when the first time a printed version of the Quran was mooted and was put forward on the table, no, we're not going to do it. Why? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didn't do it. But then afterwards they saw the need, they did it. Throughout history you will find the principles will remain. We will use methodologies according to the need of the time. So whether it be Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, who started off making mention with regard to the masla of Khalqul Quran, or whether Imam Ghazali rahmatullah alayhi, seeing the widespread influence of the philosophers, wrote his magnum opus, the Hafatul Falasifa, the incoherence of the philosophers, which was a unique book.
he not only saw that there was a need to combat the philosophers, because they had become, and their way was becoming prevalent in the ummah, he broke their arguments from their own writing, and he wrote the incoherence of the philosophers. Today there is such a great need for us to look at Western thought and to look at the flaws of Western thought, but we don't do it because we as an ummah, we have gone really backwards from our objective. So nevertheless, this is what I'm talking about. The aspect of Islam will always be there. It will always be an aspect with regard to our steadfastness, and may Allah Ta'ala always keep us steadfast. I just give you an example of, but there will be different methodologies that we have to keep in mind. Now when we talk about the family, let me give you an example of how things, sometimes you have to make changes according to the situation. Right? Very famous example in Sahih Bukhari. Umar radiallahu anhu comes one day to our beloved Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, and he sees Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam smiling. And he said, Adhak Allahu sinnaka ya Rasulullah. May Allah Ta'ala keep you smiling, O Prophet of Almighty Allah. Allah always keep you smiling. What are you smiling? Oh Umar, I'm laughing at the woman who had come to me to present some of the demands and some of the situations. And they were sitting and arguing with me, and they were sitting and talking to me about some of the aspects. And when they heard you coming, they heard you knocking at the door, they all fled. They all fled. And they all left, and they all ran away. And Umar radiallahu anhu said, Ya aduwati anfusikunna, O enemies of your own small soul, are you afraid of me and you're not afraid of the Prophet of Almighty Allah? And they replied, Kunta afaz wa aqlas. You are even more harsh than the Prophet of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And then Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam laughed and said, O Umar, leave them. You are such a person that when you take a road and you take a path, even shaitan takes another path. Right? Now, the point is, and this is something that Umar then went on to make mention in his cause. He came one day to Nabi sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, do you realize that since we have come to Medina, our women have changed? So Nabi sallallahu alaihi wasallam said, what do you mean, Umar? He said, the women of the Ansar, they are more forthright, they are more people who are independent of nature, who are not shy to make mention of their views. And since our women from Mecca, who were normally more conservative and normally were under the aspect of the husband's authority all the time, since they have come to Medina, they have changed. Now they're also asking about things, and they're also speaking. And so, Ya Rasulullah, do you know, this morning my wife spoke against me, and this was unheard of in Makkah and Mukarramah. This was unheard of in Makkah and Mukarramah. Now the point I'm making is that Islam will always remain. Change, circumstances will change. Here we saw circumstances changing in the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and the Sahaba and Nabi sallallahu alaihi wasallam made adjustments to it. Today I find it very difficult that we can say that Islam is there, we don't have to make any changes, that is good enough. Yes, we believe in the principles of Islam, but there are always going to be situations that will change according to having the methodology of how things are. It's impossible for us to understand and think that today we will not have more assertive females than what they were 50 years ago. Because of what the entire situation in the world is, the emphasis upon women's rights, the emphasis upon women's freedom, we need to come to terms with it. We need to understand it from our Sharia and deal with it accordingly. Not get frightened with regard to it and just make a wide and sweeping statement and fatwa with regard to it. That is not going to solve the problem. And that's where I think this counseling becomes such an important point in our situation. So these are some of the situations that we have spoken about. So I think firstly we need to understand, yes, Islam is going to be our basis. There are going to be changing circumstances, and according to that changing circumstances, we will adopt methodologies. We will keep the principles, but we will use methodologies, and we will use situations according to what we find. Just give an example of parenting. We all know that our parents 20, 30 years ago, we were authoritarian parents. So, we always used to say that children must be seen but must not be heard. I've heard this English saying many times, and especially in our Indian community, that's how it was. Today we don't have that situation. Our children are changed.
So we have different methodologies and different methods of parenting. So you find that amongst parenting there's a free rein. So you give your children to do whatever, they can do whatever they want, which is disastrous. Then you have a permissive parent, a person who doesn't worry with regard to what his child does or doesn't do. In terms of morality, he's permissive. So if they do this, that's their responsibility, let them do it. That is also something that is not the proper method of parenting. And of course, they have these different methods of parenting, which we do in workshops. And then of course, the third type of the stuff is an authoritarian. You do what I say, and I don't want to listen to you. You just do whatever I say. Now that might seem very good, but in reality what you are doing, you are breeding discontent silently and discreetly in the child. He might do what you are saying, but whether he is happy to do that, whether he wants to do it, whether he will rebel in for time to come, you don't know. You just tell him something and he listens, maybe because of the force of your argument or because you are a parent, but is it the best way of parenting? But of course, in today's time, people will say that in today's time, experiences show that that is not the best way of parenting. Today we talk about another method of parenting, which we call about, the parent as a mediator. So you start mediating discipline. You will say, okay, I will allow you so much, but then you are not supposed to do this much. I will allow you to use the phone, but on these conditions. Right? So we have different situations that come into the world and we have to deal with it in a different way. In similar manner with regard to this particular aspect of the situation with regard to family. Family today is, despite its importance, is in a crisis. And Mufti Ashfaq was an example that was given of him going into a court and seeing people who were apparently with Islamic dress, and yet they were in court and they were having great amount of disputes. What can I say with regard to the situation in today's time with regard to our family? Family is the nucleus of society. What society is going to become or not become depends upon the individual families. Because individual families, they form societies. What society is, it is a result of individual families. And yet we all know, and that is the reason why when Nabi Karim Sallallahu in a hadith in Sahih Muslim, there is mention made of Iblis, the big Iblis, taking reports from all the smaller jinnat and all the smaller shaitans. And one of them say, I made a person not read salat. The other one said, I made him commit this guna. The other one said that I made him, prevented him from doing this good. Iblis doesn't pay much attention to them. Until one of the small Iblis and small shaitans and jinnats come and said that today I made the husband and wife fight. I didn't leave them until I made them divorce and separate from one another. I didn't leave them until they separated from one another. Iblis leaves all the smaller shaitans. He leaves all the smaller jinnats who are giving reports with regard to what they have done to make human beings do evil. And he calls a small jinnat and said, you come and sit here. You have done more than anyone else. You have done the greatest evil. Because when family breaks up, then it is not only two individuals breaking up, which we have to understand. It has a consequences and a repercussion upon the children, upon the broader family, upon the extended family, and it causes untold harm. Yet we are at a situation today that we are seeing things happening, yet we are not taking steps with regard to it. One sister was making mention that I am passionate to work for the community. SubhanAllah, either we can just sit back and say and talk about it and gossip about it. Do you know this one and this one had a divorce? Do you know this one and this one have marital problems? Or we can become part of the solution rather than part of the problems. Sahih Muslim, there is a hadith, and I just love this hadith. It is something that each and every one of us here, from what you have been telling us, it is, you are an activist in some way. And if you are an activist, I would like you to make this hadith the passion. I would like you to make this hadith your motto. Nabi Karim Sallallahu said, Al-Muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min al-Muslim alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. The Muslim who intermingles with people, who tries to solve their problems. And in that he bears inconvenience. Because while you are going to solve people's problems, you're going to have difficulty. Al-Muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. And he bears patiently what they tell him after he tries to help them. Khayrum, he is better than that Muslim, la yukhalitu an-nas, who doesn't intermingle with people, doesn't want to worry about the concerns of the people, the problems and the worries of the people.
وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ عَذَاهُمْ, and he doesn't have to worry about the inconvenience of listening to people. Now today you and I, we all know that the general perception in our community is this, that why must I get involved? Especially when you get involved and someone has to say something to you, and someone afterwards tell you something, you come home and your wife will tell you, or your family will tell you, yeah, go and solve people's problems, see what you get. Then you take this hadith, the Muslim who intermingles with people, and he bears in with patience the inconvenience they give him by intermingling and solving their problems. He is better than that Muslim who sits at home and does nothing. He is better. Say Muslim hadith. Nabi Karim Sallallahu never sat at home. Nabi Sallallahu was in the forefront of dealing with every type of problem. Sometimes it is amazing. One day there was a loud noise that emanated in Medina and Munawwara. Right? And now you would think, what's going to happen? When we have a big noise that emanates in our neighborhood, what will we do? We will phone the police. Right? Or we will try and do something. What an amazing thing. When the people of Medina came out of their home with apprehension, with fear, with anxiety, and sometimes I'm just lost for words with regard to saying what they saw in front of them. The beloved of Allah on his horseback, telling the people of Medina, don't worry, I myself went to go and see the source of noise, there is nothing to worry about. Today even the most dindar person will not do something like that. Yet we will say we must follow the sunnah of Nabi Karim Sallallahu. This was also the sunnah of Nabi Sallallahu. When there was a noise in Medina, he was the first person to go and see what was the source of noise, and he came and give people, the salli. He came and give them, the aspect of comfort, there is nothing to worry about. And we have situations, and something of our situations, we are in very similar situations in South Africa and India. We used to, and I'm going to say this maybe as a point of maybe disappointment. We know India has got the largest number of Muslims in one country. Never mind as minorities, there is no other country in the world that has got so many Muslims the way India has got. I think India is supposed to be a shining example. And perhaps when you look at the history of India and you look at the first Minister of Education in India after partition was Maulana Abul Kalam Azad. And you start thinking that a community that had that type of influence, that they were in charge of the education, not only of Muslim education, the entire education of the entire country. What has happened to them that today they have situations, they are supposed to be in situations where they are supposed to have infrastructure that the entire world is supposed to gather and gain benefit from. Not that an alim from South Africa must come tell you about the Islamic care. And really, I feel that maybe something that is Muslims in India we have to look at. You had the first Minister of Education being not only a Muslim, but a high-ranking alim of great standing. Even today, people, when they talk about Urdu literature and they talk about Urdu writing, they talk about the writing of Maulana Abul Kalam Azad in Al-Hilal, how he wrote, and from there, what has happened? Have we digressed? Have we perhaps lost our focus? Have we become involved in things that we are not supposed to be involved in? So I think it's something that, and I was very, very pleased when I looked at the introduction, seeing people who are in such prominent positions. I think we have a responsibility to relive and to bring about that type of situation that was in the initial stages of India, because you see Muslims digressing at a rate that is not very, very good for the future of the country. But at the same time, we are seeing such beautiful examples of a revitalization towards that particular ideal. So in this regard, I'm just going to stop here and maybe just maybe make mention with regard to one or two other things. The aspect of our situation, the Islamic care. Let me give you an example of what's back. It must have been 30 years back. I had been at one of the offices of the Jamiat Ulema, and a woman approached me by the name who was doing counseling in a non-Muslim counseling service. And she said that I'm finding it very difficult that I have to counsel Muslims, but under the banner of a non-Muslim, counseling service. Why can't we set up something on our own? She went to various Muslim organizations, and up till now she said that I find it very difficult to believe that the only people who gave me support to start off something is the Jamiat Ulema. She said, I expected, we have in our situation, sometimes we have all this type of, labeling, and sometimes labeling is not always very beneficial. It takes us away from doing work,
So they normally say that there is no limit to what a person can do if he doesn't worry who gets the credit. There is no limit to what a person can do if he doesn't worry who gets the credit. Today, that's one of the problems that we have. Everyone is worried with regard to who's going to get the credit with regard to it. That is why our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam had said, Tuba lil mukhlisin, ulaika masabihul huda. Congratulations be upon those who do things for the sake of Allah. They are the lanterns of guidance. They are the lanterns of guidance. Who? Those who do things solely for the sake of Allah, who don't do things for their own name or for the sake of their own organization, etc. Nevertheless, this whole particular aspect came about, and we started off a care line. We started off very small. We have a very small office. Today, Alhamdulillah, amongst the aspects that has been, we have under the Jamiat Ulema, we have 3 different counseling services. And the reason why we have 3 was to make it more decentralized. So we have one in Johannesburg under the name of the Islamic Care Line. I got a whole presentation which they have given me of some of the programs. I'm a executive and shura member. We meet four times a year to oversee the activities of the care line. It has 6 full-time staff. It has 30 volunteers. 18 of them have degrees in senior counseling. What is it, right? Trained counselors who are contracted to on a weekly shift, right? So there's out of the 30 volunteers, 18 have got degrees in advanced counseling skills. So, but they are doing it voluntarily. So you have 6 who are doing it, who are under the Islamic Care Line, and then you have 30 volunteers, 18 who give their time, and according to the time that they give, a timetable is made to allocate these counselors to various situations. Now, just to give an example with regard to the need of this, as I said, today I was just coming, and on my way between Johannesburg and Dubai, I met a person who came to sit with me, and he told me that, Maulana, my wife is gone for 1.5 years, and now things are so difficult to bring things down and to reconcile. So he said, Maulana, why don't you get, as in our community, someone who can deal with situations at the time when there is disputes at the first level, at the first time, so that when he can do it at that particular time, things will not go out of hand and things will not become so difficult thereafter to reconcile. So I just looked at him and I said, Subhanallah. And then when I thought about and I looked at what you are saying, I just remember what he said. I said, just 2 days ago I was coming and I was speaking, and this person was saying, why don't you get, in this aspect of doing counseling with the intention of bringing people together, it is such a great, community work that, and such a great, rewarding aspect that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam one day said to the Sahaba, "Ala ukhbirukum bi afzali darajati al-qa'im al-layli wa sa'im an-nahar." The Sahaba were always in the lookout for good deeds, and Nabi sallallahu alaihi wasallam telling them, should I not tell you something that is even more better than performing nafil salat, more better than your tahajjud namaz, more better than your nafil rozas, whether it be the roza of 9th of 9th and 10th of Muharram, whether it be of 9th of Arafah. Can I not tell you something that is even more rewarding than your nafil rozas, than your nafil salah? Bala ya Rasulullah, definitely tell us ya Rasulullah, which is that? What is that? Even more rewarding than tahajjud, more rewarding than our rozas and fasting on the 9th and 10th of Muharram and on the 9th of Arafah. What is that ya Rasulullah? Al-Islahu dhatul bayyin, to bring people together, to reconcile people. Do you know why, O my Sahaba? Because when people are in disputes and are fighting, here haliqa, it destroys, it shaves off. The word haliqa means to shave off. Here Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meant it in the word of destroying. And he said here haliqa, it shaves, and not using the word haliqa in terms of shaving off the hair. It shaves off your deen. It doesn't always shave off your personal type of peace of mind and contentment. It shaves off your whole deen. When you fight, it shaves off your whole deen. You have an opportunity to be able to get together, to be able to provide a service that will inshallah bring people together, which will counsel them with regard to their difficulties. Let me end off, and of course then maybe we can have a small interactive session with regard to how to go forward, and I will give you perhaps more details if we have. We also got in our Muslim Mediation and Arbitration Council, and maybe I will tell you more about that, because that was a joint
collaborative effort between Muslim lawyers and ulama to say that instead of people going to court, you come and do arbitration and mediation. And of course, in South Africa at the moment, the courts pay a lot of attention to mediation and arbitration. Many a times when things come to the table and to the court, and especially it is to do with regard to business disputes or with regard to community disputes, many times the judges will say, go and arbitrate it within your own community. Why are you coming to the court? And if we can have a situation where instead of us going to court, we can have a situation where people can come, but we have to build that credibility. And somehow or the other, it is very difficult to build that credibility within our Muslim community because we don't have trust in one another. That's one of the problems that we are facing. But how do we do it? And just to give you an example, what actually happens when people fight. When people fight, they don't realize that they're harming themselves. And in the process, while they were fighting, they were harming themselves. They say spouses were one day fighting, The husband and wife were one day fighting. And they were not talking to one another. Now, in today's time, they say you have to be gender sensitive. So I'm not going to say who was doing what and who did what. So one of the spouses had to get up early in the morning to take a flight. So when they wanted to get up early in the morning, but now normally the other spouse used to wake the spouse up to go early to the airport. Right? But now they were not talking. So how do they communicate? So one of the spouses wrote a small note at the bedside of the other spouse, I'm catching a flight tomorrow morning, 6 o'clock, please wake me up 4 o'clock to be able to get the flight. And the next morning he got up, it was already 6 o'clock and he realized he's missing the flight and he was angry. Now what am I going to do? I told my spouse that she must wake me up. And then when he turns around, he sees on his bedside, it is 4 a.m. get up. Now many times when we fight, this is what actually happens. We harm ourselves in terms of, and Allah says, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Do not dispute with one another. Allah Ta'ala will take away your strength. Allah Ta'ala will make you cowards. Allah Subhanahu wa Ta'ala will make you weak. When you fight, whether it be between husband and wife, whether it be the community, when you fight within the family, your family becomes weak. When you fight within the community becomes weak. And there can be no greater example of the truthfulness of this ayat than what we are seeing in today's time in our communities, in our family. May Allah give us a tawfiq. We will conclude with this. We'll have the open house. I'll request Mufti Ashfaq to start with, share a few words and then we'll take it on from there. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله. ये जो सारी तफसीलात आप सब के सामने आ गई हैं, मैं आपको एक बहुत अहम और बहुत ही पेनफुल एक मेरा वाक़या बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक इब्तिदा में तो शौहर आए, उन्होंने कहा कि मुझे फतवा चाहिए। तो मैंने कहा किस मौजू पर? उन्होंने कहा गुस्से में मैंने वाइफ को तलाक दे दिया, गुस्से की हालत में वाइफ को तलाक दे दिया, तो वो तलाक हुई या नहीं हुई। तो ये तजुर्बा करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, इंसान को इतनी सतह पता हो जाती है कि ये आदमी कहाँ का है और क्यों सवाल करना चाहता है। मैंने उनको बिठाया, उस दरमियान हम उनसे थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बैकग्राउंड्स हैं। मैंने उनसे कहा आपके पास कोई फतवा नहीं है? तो कहने लगे है फतवा, लेकिन हमें जामा मस्जिद का चाहिए। मैंने कहा जामा मस्जिद के फतवे के बाद आपका मसला सॉल्व हो जाएगा? वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो थोड़े से कंफ्यूज हुए। मैंने कहा फिर शायद आप उससे बड़ी अथॉरिटी के पास जाएंगे फतवे के लिए। आपके पास जो फतवा है वो शो कीजिए। कहे कि मेरे पास 2 फतवे हैं, एक में तलाक हो गई है और एक में तलाक नहीं हुई। मैंने कहा फिर मैं जो फतवा दूंगा या तो ये दूंगा कि तलाक हुई है या ये दूंगा या तलाक नहीं हुई। आपका मसला तो सॉल्व नहीं होगा इससे, आप फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपकी एक पार्टी कहेगी कि हमने जिस मुफ्ती से पूछा वहाँ तलाक हुई है, हम, और दूसरी पार्टी कहेगी हमने जिस मुफ्ती से पूछा वहाँ तलाक नहीं हुई। तो एक काम करते हैं, आपके इस मसले पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। उनकी एज थी 36 ईयर्स, तो उनकी 36 ईयर्स का एक खुलासा हमने 5-7 पेजेस में लिखा। और बहुत सारे वो स्ट्रगल, सीए बनना चाहते थे नहीं बन पाए, उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, ऐसे हादिसात थे जिससे पता ही चलता था कि वो अब तलाक के बारे में, गुस्से की तलाक के बारे में फ़ुक़हा उलमा ये लिखते हैं कि गुस्से के 3 लेवल हैं।
एक वो लेवल है जो बहुत हायर है, एक वो लेवल है जो बहुत लोअर है, एक वो जो है वो मीडियम है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हायर कौन सा था, लोअर कौन सा था, मीडियम कौन सा था? ये तो जाहिर बात है कि डॉक्टर बता सकते हैं। चुनांचे हमने उस मौजू पर कुरान की आयतें, अहादीस, फ़िक़्ह की सारी इबारतें, इब्न क़य्यिम का इस पर पूरा रिसाला है रहमतुल्लाह अलैह, बहुत शानदार रिसाला है। और इससे पहले के क़ज़ा यानी ऑर्डर्स, इस्लामी शरिया में जो ऑर्डर्स होते हैं दारुल क़ज़ा में, उसके फ़ैसले को देखा तो 1402 यानी तकरीबन 32 साल पहले का एक ऑर्डर मिला जो उससे हल्का केस था और उसमें स्कॉलर ने कहा था कि तलाक नहीं हुई। उसके बाद ये 4 पॉइंट पूरे होने के बाद कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, फतावाज़ एंड क़ज़ा ऑर्डर, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसमें जाहिर बात है आयात की मुख्तलिफ मानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए और उनके हाथ में अलवाह थे, अलवाह कहते हैं कुरान करीम या मसहफ़, जो उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिले थे। जब उन्होंने देखा कि कौम जो है बछड़ी की पूजा कर रही है तो उन्होंने वो, आज अगर हमारे पास प्रिंटेड कुरान कोई ज़मीन पे ज़ोर से फेंक दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम तो उस पर पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। और वो प्रिंटेड कुरान नहीं था, वो तो अलवाह थे जो अल्लाह के पास से लेकर आए थे वो। लेकिन गुस्सा, फ़ग़ज़िब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा आया और गुस्से में वो अपने काबू से बाहर हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा तो ऐसे मशहूर था, उन्होंने वो तख्ती फेंक दी जिसकी वजह से वो टूट भी गई। तो इससे दलील पकड़ी गई है कि गुस्से का वो लेवल होता है जिसमें इंसान कुछ ऐसा अमल करता है जो अमल पर उसका फैसला नहीं होता। उसके बावजूद हमने डॉक्टर, उनसे कहा कि हमको डॉक्टर की रिपोर्ट लगेगी। डॉक्टर मोतसिम से हमने बात की और उनके दोस्त हैं तो हमने इनका अपॉइंटमेंट लिया और इन्होंने पूरा हमको ये समझाया कि दिमाग के कितने मराहिल होते हैं। इंसान बात सुनने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, उसका असर कैसे होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान कैसे करता है, वो पूरी रिपोर्ट उसमें लिखने के बाद हमने ये कहा कि इन सारे नताइज, इन सारे उमूर के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये मसले में तलाक नहीं हुई। उसके बाद हमने कहा कि अब ये रिपोर्ट किसी भी मुफ्ती के पास लेकर जाएं, शायद कोई इसको चैलेंज करे, इसलिए कि डिटेल में थी। उस वक्त हमको ये एहसास हुआ कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो क्यों नहीं एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसा सेंटर डिज़ाइन किया जाए जिसमें ओवरऑल इसके हल करने की कोशिश की जाए। फिर जैसे बताया गया प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, तो 2014 में 2014 में हमारा सफ़र हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है कि एज अ मुस्लिम, सक्सेसफुल मुस्लिम इन द वर्ल्ड, तो साउथ अफ्रीका बिजनेस के लाइन से, दीनी लाइन से, बहुत सारे जगहों पर मुसलमान बहुत बिजनेस में आगे चले गए लेकिन फिर शरिया उन्होंने छोड़ दिया। वो यूरोप चले गए, अमेरिकन चले गए, वो जब वापस आए तो बाप को भी पहचानने में दुश्वारी हो रही थी, ये मेरा बेटा है या कोई गोरा या यूरोपियन आ गया। लेकिन साउथ अफ्रीका में माशाल्लाह दीन, शरिया, बिजनेस यानी माल और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टाइप है। हम गए थे रेडियो इस्लाम के लिए, वहाँ का बहुत अच्छा रेडियो है, उसको कॉपी यहाँ करने के लिए, लेकिन यहाँ की कुछ डिफिकल्टीज थी। उसके साथ साथ हमने वहाँ पर ये केयर लाइन देखा जहाँ पर काउंसलिंग का निज़ाम है। उसके बाद मुझे पता चला कि मलेशिया में प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स हर कपल के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर कोई काजी निकाहनामा नहीं दे सकता। और वहाँ वो डिज़ाइन है, चूँकि एक ऐसी कंट्री है जिसमें 2 रूल चलते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी है, वहाँ किंग भी है और किंग के मातहत निज़ाम शरिया चलता है, जिसमें जैसे हमारे यहाँ पुलिस का एरिया होता है, अगर एक घर इस डिपार्टमेंट में, इस एरिया में है तो दूसरा घर दूसरे हिस्से में है, तो ऐसे मुफ्ती का भी एरिया होता है और उसको निकाह पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि कपल के पास प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स का पूरा सर्टिफिकेट हो। उसका असर ये होता है कि नॉर्मल लेवल पर भी, यानी आखिरी दर्जे के मुसलमान को भी पता होता है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी क्या होती है और हस्बैंड वाइफ के अंदर हुकूक का क्या मामला है, किसके कैसे हुकूक है, कैसी जिम्मेदारियां हैं। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, वो बच्ची लड़की रोती है, हालात सुनाती है, उसके घर वाले देखो ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। ये सारा एक दूसरा सिनेरियो होता है। मैं उसमें पूछता हूँ आपने क्या पढ़ा है, वो कहते हैं कि MBBS किया है, BCom किया है, MCom किया है। मैंने कहा कितने साल पढ़ा? 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, KG से लेकर आगे। आपके बारे में क्या पढ़ा? मैरिटल लाइफ के बारे में क्या पढ़ा? आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ा? उनकी जिम्मेदारी क्या है? तो कुछ भी नहीं है। यानी जिसमें हमको रोज़ाना ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में
कोई नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज न होने की वजह से हाउ टू डील विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, वो वहाँ पर मसला गड़बड़ होता है और फिर ये मामला हम तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए ये एक कोशिश है, अल्लाह हमको कामयाब करे। आप सबको दावत देने या बुलाने का मकसद भी ये है कि आप इस कोशिश को समझ चुके होंगे, तो आप इस सिलसिले में अपनी राय भी दें, अपने मशवरे भी दें कि अगर हो सके तो यहाँ पर बयान करें, और अगर तफसील में देना चाहते हैं, इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात देना चाहते हैं, तो आप रिटन भी उसको पेश कर सकते हैं। और उसके अलावा एक मतलब ये कि 1-to-1 मीटिंग्स भी हो सकती हैं, और इसको फिर इंशाअल्लाह एक सही तरीके से, यानी इसमें हमने सोचा है मस्जिद में तो होता है, बहुत सारे दारुल इफ्ता में होता है, दारुल क़ज़ा में होता है, लेकिन इसको एक प्रोफेशनल सिस्टम पर डिज़ाइन किया जाए, कमर्शियल ना हो, लेकिन वहाँ पर चार्जेस भी हो, ताकि हमारे काउंसलर्स तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी फ़ीस होती है उनकी, वो जब यहाँ आए हैं तो वो आज भी उन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर आए होंगे। तो इसलिए वो सारा डिज़ाइन इस तरह हो कि कमर्शियल ना हो, लेकिन प्रोफेशनल सिस्टम हो, ताकि हम सही रिजल्ट लोगों को दे सकें। How to take this forward? What have we done till now? What have we done till now? अब तक के जो है ना, जो फिलहाल ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जैसे बताया कि आज तो इनॉग्रेशन हो रहा है शेख के हाथों से, जो बात उन्होंने रखा है, तो फिलहाल जो प्लानिंग है बिजनेस में, जो एक मॉडल होता है कमर्शियल का, कि उसकी जो प्लानिंग पे लास्ट मेरे ख्याल से 6 महीने तक काम हो रहा है, और इस बीच में काफ़ी काउंसलर से मुलाकात हुई है मुफ्ती साहब की और इनकी जो टेक्निकल टीम है। सो राइट नाउ वी आर द स्टेज वेयर जो बिजनेस पिच है वो रेडी है, एंड आई थिंक दी ऑफिस की लोकेशन वगैरह जो है देख चुके हैं इंशाल्लाह, एंड द आइडिया इज टू राइट नाउ जो इंटरनल डेलिब्रेशन है कि विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट को किया जाए, उस लेवल पे फिलहाल है। तो आई थिंक जो काउंसलिंग हो रही है वो आपके वो इंडिविजुअल लेवल हो रही है, जो बिजनेस की प्लानिंग हो रही है, वी आर एट द स्टेज वेयर अबाउट टू लॉन्च विद द रेंटल ऑफिस। एनीथिंग टू ऐड हियर? What we mainly need is, the feedback from the professionals in this field, because we have the investors, we have the team over here with like Mufti Ashfaq, but our background is not from the psychology or the counseling field. So we are expecting a lot of feedback from you and ideas from you how we can make this successful. Dr. Huzaifa here again. One thing that I think Dr. Rukshida will agree with me, when we have people coming in with conflicts, is the need to understand that the male brain is very different from the female brain. Structurally, ऊपर से खोल के देखो तो एक जैसे दिखते हैं, मगर अंदर वायरिंग काफी अलग है, और काफी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए भी होती हैं कि each partner tries to make the other person be more like him or her, and each partner also resists the attempt to change that transformation. So unless this research, this understanding how the male brain is different from the female brain is imparted to both the genders, and if this is done before the marriage, Alhamdulillah, I think it can prevent or minimize a lot of friction. So that is just one tiny thought that I had in mind. I'm sure other people have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से जितने यहाँ बैठे हैं मेरे से बड़े नहीं हैं। I am 80-year-old man, and since last 51 years we are same wife and same husband. फैमिली को अगर आप चाहते हैं कि यूनाइटेड रहे, तो मेरा एक सवाल है, 2-3 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं वो, मैं यहाँ टीचर हूँ, लेक्चर देने नहीं आया, कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं आपको बताने आया हूँ। पहले तो मैं एलिगेशन जिसको बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है एक है वो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है क्योंकि वो वाहिद एक ही थे।
Are we really Ashraful Alamin? This is my question to all. ये सब प्रॉब्लम इसलिए रहे हैं कि हम अशरफ नहीं बन सके, ये जानने के बाद भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आप रहमतुल आलमीन। मुझे कुछ अंदर से हो रहा है, मैं इतना कांपा नहीं हूं जितना बच्चों के सामने जब खड़ा रहता हूं। आप लोग खास करके इससे बड़े बड़े उलमा बैठे हुए, फिर 2-3 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको। एक तो मेरा खुद का फतवा मैं बता दूं, मेरा खुद का फतवा है, वंस वी बिकम मोमिन अल्लाह खुश हो जाता है। ये मेरा मोमिन है, वो अपने को प्रमोट करता है और कहता है या अहलुज़िनामनु, हे ईमान वाला, मुझे है करके पुकारा और ईमान वाला बना दिया, मेरा प्रमोशन होगा। मैं एमएससी से पीएचडी हो गया, अल्लाह और खुश हुआ जब मैं ईमान वाला बन गया तो मुझे गौरव फिक्र करने वाला बनाया, सोच समझ के कदम उठाने वाला। मेरे हिसाब से मुसलमान वो नहीं जो अपने कुछ भी किए ऊपर पकता है, मुसलमान वो है हर कदम पर वो अपने आप को बेहतरीन समझे, अपने आप को ईमान वाला या तो अशरफ समझे और अपने किए पर कभी पकता ही, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरे सामने मेरे कई स्टूडेंट बैठे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यहां है अभी मौजूद। मैंने 300 से ज्यादा, अल्लाह ने बनाया, मैं नहीं, 300 से ज्यादा के डॉक्टर और 500 से ज्यादा के इंजीनियर बनाए और अभी इंसान बनाने का काम कर रहा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि मोमिन कभी बढ़ता नहीं। हम बढ़ते हैं, हम सुल्तान थे, हम निजाम थे, हम बादशाह थे, हम मोगल थे, हम क्या नहीं थे। जिस मुल्क के अंदर आप लोगों ने 1150 साल हुकूमत किया, आज कहीं के नहीं रहे। क्यों? कभी अपने आप को अंदर पूछा ये? पूछो। आज तुम्हारी बिल्कुल नहीं, मोदी ने तो प्रूव कर दिया कि मुसलमान का मुझे एक वोट भी नहीं चाहिए। क्यों? कि तुम बटे हुए हो। अगर सही अल्फाज में कहूं, हम मुसलमान है ही नहीं। अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं सुन्नी भी हूं, अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं वहाबी भी हूं, अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं देवबंदी और बरेलवी भी हूं, और ये सबको मिलकर मैं मुसलमान बना हुआ हूं। मैं बरेलवी नहीं हूं, मैं सुन्नी नहीं हूं, मैं देवबंदी नहीं हूं। क्या ये जज्बा आप पैदा कर सकेंगे? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कुरान के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर। मेरे घर पे कई बच्चे पढ़ने के जाते हैं और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा इतनी बड़ी फ्रेम लगा के रखा हुआ है। मुसलमान पढ़ लेते हैं, देखते हैं, समझ लेते हैं। नॉन मुस्लिम आता है, पढ़ता है और वो कहता है कि सर ये इंसान के अल्फाज नहीं, ये इंसान के अल्फाज नहीं है। आप जरा देखिए, अभी मैं जो आता हूं मेरी खुद की लाइफ पर, आपने कहा कि जितना राइट आपको अपनी बीवी पर है, इतना ही राइट आपकी बीवी को तुम्हारे है नहीं है। हमने राइट दिए, अगर नहीं दिए तो प्रॉब्लम होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है। मैं जास्ती नहीं कहूंगा, कहीं काफी कहने का है, क्योंकि मैं एक मामूली टीचर, 450 रुपये का तनख्वाह मम्मी में जो आया, टीचर जब बना स्कूल के अंदर 215 रुपया मिलता था। 215 रुपये में बहुत खुश था, 450 में बहुत खुश था। 450 के बाद इसमें मैंने 2 इंजीनियर, मेरी मिसेस ने, मैंने नहीं, वो जब मैं एमएससी हो गया, इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग बोर्डन। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत अच्छा वाकया बताया, और जब पार्ट होने का था, अलग होने का था,
मूसा अतस्से ये मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कौन सी बुक मुझे याद नहीं। तो पहला जो नसीहत दिया खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो है कि व्हेन यू आर बिफोर ऑडियंस, सी दैट ऑडियंस शुड नॉट गेट बोर्डम, ऑडियंस शुड नॉट गेट बोर्डम। मैंने आज पकड़ के रखा और अल्लाह का करम है कि आज 65 से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कोई बोर्डम नहीं हुआ। वजह ये थी कि बोलना है वही बोलना है, सच बोलना है। मुसलमान हूँ, गलत प्रॉमिस नहीं था नरेंद्र मोदी की तरह, हालांकि वो भी घांची है, मैं भी घांची हूँ, वो बढ़िया घांची है और मैं वाकई घांची, लेकिन गलत प्रॉमिस, गलत इंस्पिरेशन, गलत तरीका कभी नहीं बताया। सही बात सामने रखी और सही बात के अंदर हम खास करके हमारे मौलाना से हमने बहुत सुना है यहूदी और नसारा के बारे में, गालियाँ देते हैं, उनके लिए तो जन्नत ही है, जन्नत सिर्फ हमारे लिए ही है। हम वाकई और अहले में अहले, बेहतर में बेहतर जन्नतुल फिरदौस है, वहां हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन ये दुनिया हमारे लिए मुसीबत का एक सबब बन गया है। कंट्रोवर्सी, देखो मैं इल्म में बहुत कमजोर, दीन में भी बहुत कमजोर हूं, मैं काफी लोग घूमा। अगर जन्नत नहीं मिलेगी तो जन्नत दे ब्रॉट डाउन ऑन द अर्थ, वहां कॉकरोच नहीं है, वहाँ मच्छर नहीं है, वहाँ फ्लाई नहीं है, वहाँ स्टेगनेंट वाटर नहीं है। कई बीमारियों को इन लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया, इंडिया को भेज दिया, पाकिस्तान को भेज दिया, बांग्लादेश को, और उसके साथ में इन फाइटिंग भी हमारे पर जोड़ती है। और जब जरूरत है हमको लड़ा देते हैं हम लोग इन लोगों को बहुत बड़े होशियार हैं और काम भी लेते हैं। दो एग्जाम्पल में एक यहूदी और नसारा का देता हूँ जो मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ में। मेरा लड़का एक ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ है, वहाँ की डिक्शनरी पासपोर्ट मिल गया है, मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैंने दाढ़ी मेरे बच्चों को रखते हुए देख के बने रखना शुरू कर दिया। वहाँ यहाँ हमने जाकिर नाइक को भगा दिया, वहाँ वो दिन का काम कर रहा है। टोपी यहूदी की नहीं थी, छोटी टोपी होती तो मैं समझ लेता यहूदी, बड़ी टोपी पे दाढ़ी भी लंबी थी। तो मैंने जाके खाना था, बर्गर मांगा, उसने बर्गर निकाला, मेरे हाथ में दे दिया, मैंने पैसे भी दे दिए, तिजोरी में डाला। मैं बर्गर लेके आगे जा रहा था मेरी मिसेस को लेके, रहा नहीं गया। मेरे बच्चे ने कहा था पापा पूछ रहे, लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हलाल बनवाओ। तो मैंने बोला इस हलाल, मेरे हाथ में बर्गर ले लिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया, तिजोरी में पैसे निकाले और मेरे हाथ में रखने, मैंने बोला नहीं लूंगा। बोले आई एम सॉरी, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू दैट यू आर अ मुस्लिम। यहूदी था। आप इसको यहूदी बोलेंगे कि मुसलमान बोलेंगे? अल्लाह हमको पूछेगा कि मैंने तुमको इतना अच्छा बड़ा दिन दिया था, तूने उसको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? दूसरा एक वाक्य ऑस्ट्रेलिया का ही है, नसारा का, बहुत अच्छी बात है। हम मेरे यहाँ नवाज की पोते हैं, नाना दादा हमारे लिए चिंगम लाना, फला नाम का। तो मेरे बच्चे को पूछा कि बेटा ये चिंगम बहुत दूर जाना पड़ेगा, शायद रोज तुम अपने को मिल जाए, पर चिंगम जो है उसमें भी वो तो सुअर का जो निकलता है वो मिला देते हैं, वो हलाल नहीं होता। गया में काउंटर पर लड़की बैठी हुई है, ट्रांसपेरेंट बात करे, अपने को शर्म आती, उनको शर्म नहीं आती, अपने को शर्म आती। मैं गया अंदर, 3-4 पैकेट निकला चिंगम का, कुछ और सामान लिया, काउंटर आए तो चिंगम के 4 पैकेट जो उसने हटा दिया वहां से। मैं बोला बेटा मैं इनके लिए तो आया था, ये मुझे चाहिए। नो अंकल, इट्स एक्सपायरी इज ओवर। एंड उसको फील रहा था, अंदर से फील हो रहा था, हाउ इट रिमेन ऑन द शेल्फ विदाउट माय नोटिस। नो अंकल, व्हेन यू आर फ्लाइंग, आई टोल्ड दैट टुमारो आई एम फ्लाइंग, टुडे इवनिंग you will get this full ticket at your residence.
एंड बिफोर आई रीच टू माई रेसिडेंस आई गॉट इट। आप उसको मुसलमान बोलेंगे या नसारा बोलेंगे? मैंने बताया कि जाकिर नाइक को हमने भगा दिया। मेरा लड़का वहाँ दिन का काम करता है और वहाँ जब भी जुमा की नमाज होती है, आप चाहिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मस्जिद के अंदर जाके जुमा की नमाज होती है, बड़े बड़े 4-5 टेबल लगे हैं, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट तुमको निकाल कर प्रोड्यूस कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, कुछ ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, लेके आते हैं साथ में, नमाज के बाद खड़े रहते हैं, एक दूसरे को ऑफर करते हैं, खाते हैं, और जो दीन एक्सेप्ट करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, शहादा लेते हैं, तो उनके सामने सब लोग लाइन में खड़े रहता है, अपना कार्ड देते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं बेटा तकलीफ आएगी, हम तुम्हारे साथ में हैं। हम यहाँ अपने भाई को मुसलमान करने के लिए तैयार नहीं है, गहरी अपने को मुसलमान कहते हैं। मेरे लड़की की तारीफ देख के और उसको इंसाफ वाला समझने के एडिलेड के अंदर उसको वहाँ की साउथ हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने जस्टिस ऑफ पीस का किताब दिया। जस्टिस ऑफ पीस का किताब इसलिए दिया कि तुम हमारे बिगड़े हुए जो है ना निहायती गए गुजरे हैं उनको इंसान बना रहे हो। यहाँ हमने जाके नाइक को भगा दिया और वहाँ इनको बिकॉज ऑफ हिज दिस वर्क, अगर वो मुसलमान बने, यहूदी बने, नसारा बने, हमको कोई तकलीफ नहीं, वो बिगड़ा हुआ है, वो इंसान बन रहा है। हम आपको जस्टिस ऑफ पीस बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन आखिर में इतना ही है कि मुझे पहले बोलते हैं कि भाई तुम्हारे 51 वर्ष शादी की क्यों गए, तो लास्ट में एक बोलता हूँ मैं, आशिक और माशूक, ऐसा तो हमारी जिंदगी में रहा ही। देहाती लड़की है मेरी बीवी, मैं पढ़ा लिखा है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ी है, लेकिन कोठासू जिसको बोलते हैं अंदर, वो बहुत उस पर मैंने नहीं बनाया, किसी का है कि माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किसमिस में आ रहा है। माशाअल्लाह तबारक। अव्वास को मतलब है गौहर से, नसब से। ये अखलाकी बातें हैं और वाक़तन जो यूरोप कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अखलाकी बातें झूठ के मुनासबत से या एथिक्स और एसोसिएटेड विद एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लेडीज विंग में हमारा यहाँ पे फ्री मराइटल काउंसलिंग कोर्सेज शुरू हुए थे। जो कंटेंट था वो सिर्फ वो कोर्सेज जो थे वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए कराए गए थे और फायदेमंद होने के बदले आई वुड से बहुत डैमेजिंग था, क्योंकि वो सिर्फ रिबेल्स क्रिएट कर रहे थे, मतलब कर नहीं रहे थे बट वो हुआ आउटकम इस तरह से। Because after that, all of us were telling our parents, we don't want to marry this boy, we don't want to marry that boy. And सारे के सारे, all of us were doing that. ऐसा कोई था नहीं उसमें से who had any respect left for parents कि आपने choose किया है, so we will consider. वो consider भी नहीं करना था. We wanted our right to marry the person we want to marry. That's one of the only things that course did. Sorry, but now when I look back, we became the joke of the society. ये था कि इस्लामिक होने पर इस किस्म से हो जाती है गर्ल्स, सो इससे अच्छा है कि आप इस्लामिक होए ना, आप थोड़े से रेगुलराइज्ड काइंड ऑफ ऑडियंस रहें, गर्ल्स रहें। बॉयज पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई थी। गर्ल्स आर ऑलरेडी वन नॉच अप बिकॉज maybe by nature or by their structure of the brain or whatever, they're more into reading, researching, attending, you know, ये सब वो socializing उस तरह की उनकी होती है और हम लोग ज़्यादातर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, so we have that kind of a, you know, understanding already. जो boys हैं, they have no idea, they have just absolutely no idea कि हो क्या रहा है। जब अगर किसी से पूछा भी जाता है, recently I had in my house, my niece was getting married. The boy came to see her, so I told the boy that देखिए आपके लिए सिर्फ probably ये एक ही मौका मिला है आपको जो बात करनी है, you talk to her. He was so shocked. They asked me, आपकी क्या love marriage हुई है? I said नहीं। आप then I asked, आपने इस तरह का सवाल क्यों किया मुझसे? They said because आप ऐसी बातें कर रही है कि आप लोगों को साथ में रहना है, आप लोग बात कर लीजिए, आप इस किस्म के भड़काऊ किस्म की बातें कर रहे हैं कि we thought कि आपकी लव मैरिज हुई है और आप you know फैमिली के अगेंस्ट होकर। I was just being general. I said हमारे टिपिकल कल्चर में शायद आपको दूसरा मौका ना मिले, तो अगर आप लोगों को कोई बात करनी है आप लोग कर लीजिए। I was present there, my husband was there, etc. लोग थे। हम लोगों ने एक हॉल में एक कॉर्नर बनता है जहाँ डाइनिंग एरिया है, उस तरफ हम लोगों को बिठा दिया था, इस तरफ डाइनिंग एरिया के ही इस तरफ हम लोग खड़े थे। बट इट वॉज सो ऑकवर्ड, दैट होल फैमिली वाज शॉक्ड कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा you know हमारे घर में तो कोई लड़की लड़का देखते भी नहीं आपस में, और यहाँ पे देखो इस किस्म की बातें बताई जा रही है।
So what I mean to say is that the boys are really lagging behind. The men of our community are really lagging behind. जबकि women have an idea, थोड़ा उनको टेम करना पड़ेगा because एक वो होता है कि बहुत ही how can we strike a balance, क्योंकि वो कोर्स तो बहुत डैमेजिंग था हम सब लोगों के लिए. At that age we were so excited, सबको दाढ़ी वाला उस किस्म का हस्बैंड चाहिए था. So I remember my sister and me telling our father, and we come from very wealthy families, telling our father हम 5,000 रुपए का जो कमाएगा तो हम उनसे शादी कर लेंगे, हम मगर हमको दाढ़ी वाले टखने के ऊपर पजामे वाले और दीनदार इंसान चाहिए. That's not practical. And our fathers thought it was such a joke. They were like, क्या हो गया है हमारी बेटियों को? तो इस किस्म की गैदरिंग में वो जाए ही ना. Now as adults I realize what we were doing. So if we are looking at something like that, we have to be extremely cautious कि उसका content क्या हो, course content. And while you are talking to the girls, अगर आप बोल रहे हैं उनको वो हदीस बता रहे हैं कि 3 क्राइटेरिया है आपके पास, उसको एक वेपन की तरह नहीं आप दे दीजिए कि आप जाइए स्टैब करिए अपने पेरेंट्स को that I have the criteria to choose my husband, etc. We have it, it's fine. Don't be so excited. हम लोगों को एक वेपन की तरह मिल गया था because we were very young at that time. मैं 15 years पहले की बात कर रही हूँ when I was just in my junior college years. So something which has to be very carefully designed कि young minds को आप किस तरह से for the betterment tame करें. Very good. माशाल्लाह, ये बहुत जब ये कॉन्सेप्ट जैसे हमारे असलम साहब भाई ने जब वो रोड मैप हमारा बनाया था तो उसमें एक पॉइंट लिखा था कि आइडिया कब आया माइंड में, तो ये तो 2013 का था. और ये जिस कोर्स की आपने बात की शुरू में मैंने ऑर्गेनाइजेशन जानने की कोशिश की, अशरफ भाई ने इशारा किया, लेकिन जब आप 3-4 जुमले आगे बोले तो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन और वो कोर्स और वो कोर्स की पूरी डिटेल और उसकी कई सारी कॉपीज़ और कितनी सारी फाइलें सब मेरे पास हैं. मैं इसमें थोड़ा सा आपको वजाहत करना चाहूँगा कि हमारे लिए उस वक्त बहुत आसान था कि हम उसको कॉपी पेस्ट करते स्टार्ट कर देते, लेकिन और मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें बहुत नाराज़ भी थे कि आप इतना देर लगा रहे हैं. 2014 में हमने साउथ अफ्रीका को देखा. 2015 में हमारे इस ग्रुप ने, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ऑनलाइन अमेरिका मिशिगन से एक कोर्स किया रहमान इंस्टीट्यूट का, जो बहुत पॉपुलर है वहाँ पर. 35 इयर्स से वो इस काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग को चला रहे हैं. ये 2015 था. फिर उसके बाद भी हमने सोचा कि मलेशिया देखना चाहिए कि वहाँ वो क्या है, और जाहिर बात है कि उनका कोर्स उनकी अपनी लैंग्वेज में था. हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसको इंग्लिश में या उर्दू में ट्रांसलेशन करवाएं, लेकिन एक स्टूडेंट हैं जो नदवा में पढ़ रहे हैं, मलेशियन हैं, हमने उनके ज़रिए से वो किया. उसके बाद 2017 में मवद्दा करके एक डिपार्टमेंट है सऊदी अरेबिया में, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, और सऊदी अरेबिया वो और भी जगह स्टार्ट कर रहे हैं. उसके कोर्स और उसका पूरा हम ये चाहते हैं. और फिर उसके बाद हमने सिर्फ शरिया कॉर्नर नहीं देखा इसमें, इसीलिए काउंसलर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट साइड के लोग हैं, ताकि हम ऐसा कोर्स बनाएं जो वर्केबल हो, जो मुफीद हो. तो आपकी बात बहुत अहम है और हम इस पॉइंट को नोट करते हैं. बल्कि आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके लिए एक अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करें, ताकि ये जब कोर्स प्रैक्टिकल स्टार्ट हो तो हम इस कॉर्नर से भी, चूँकि मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है जिस बात को आपने कहा है, और ये यकीनन एक ऐसा ब्लैक और वीक कॉर्नर हो जाता है जिसकी वजह से उसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं. जो अभी इन बहन ने किया था, प्रॉब्लम अभी भी वही है. हम जब बात कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें ख़वातीन की, लड़कियों की शमूलियत बहुत ज़्यादा रहती है, और वो सोसाइटी में डिस्बैलेंस इस कदर ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो इस्लामिक नॉलेज हो या फिर वो जनरल हो. और उसकी वजह से वो चीज़ जो है वो अब उसका एहसास हमको हो रहा है. जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, वो डिस्बैलेंस सोसाइटी में इस कदर ज़्यादा होता है कि आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते हैं. वो वजह ये होती है कि लड़की की अगर तालीम दुनियावी एतबार से भी सही है, और अगर अल्लाह ने उसे नवाजा है और दीनी एतबार से भी सही है, आप यकीन करें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोग लेबल करने लग जाते हैं कि इनका एटीट्यूड है, इनका ये है, मगर मसला ये होता है कि वो मिल नहीं पा रहा होता. तो मैं चाह रही थी कि चाहे वो काउंसलिंग प्रोग्राम हो या वो चाहे कोई और दीनी प्रोग्राम हो, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, यंग जनरेशन है, हम उनको कैसे केटर करें. आप यकीन करें, मैं इससे ताल्लुक रखती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें काफ़ी लड़कियाँ आ जाएंगी. वो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठी हुई हैं, वो कॉलेज में भी हैं,
वो प्रोफेशनल भी हैं और वो बाकायदा अपने क्लिनिक वगैरह भी चला रही होती हैं, लेकिन दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, और वहीं पे वो लड़के कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं जो चाहती हूँ कि काउंसलिंग का सबसे मेन चीज जो हो वो ऐसी क्या काउंसलिंग करें एज अ मदर, एज अ सिस्टर या फिर एज अ फादर, एज अ ब्रदर, कि हम जो है वो अपने बेटर हाफ को बेहतर तरीके से गाइड कर पाए। मेरा वो सजेशन रहेगा कि आप इस पर ज्यादा गौर करें। People, right from the religious to the non-religious people, I have seen a lot of conflict in the minds of people where the male ego or the female ego takes shape. We need to devise something which is not on the too extreme or the too lenient lines. You have to come in between somewhere. Like Bham said in his talk earlier, keeping the principles of Islam at the core, we need to devise something which is on the current social and the political circumstances of every human's aspect or his living conditions. I mean, this is what I thought which needs to be addressed, whereby we can create a lot more awareness within the norms of people in creating a better marital harmony between humans. That's about it. Thank you. A little more compulsory, that whenever we go out for proposals for our children, we see that the child has taken up this course and only then we interact with them. Or we promote that, like, beta, first we would like you both to join this course and then come up and then we go ahead with the, marriage proposal or something. But this becomes regularized the way it is in Malaysia. We are speaking about how to initiate it. Being the head of an institute with 4,000 students in your neighborhood and 70% of them girls, I keep on thinking about one aspect. कि हम जो बात कर रहे हैं कोर्स करना चाहिए, हम ये तय कर ले कब शुरू करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कॉलेज के लेवल में शुरू होना चाहिए। हम वो कॉलेज पास होने के बाद तब तक वो मोल्ड अलग बन गया है, तो वो मोल्ड अगर बनाना है तो जरा जल्दी से शुरू करें। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन की बात होती है, हमको वो नहीं करना है। At least at the college level we can initiate it. अगर curriculum बन जाए, and a college like Maharashtra College which has 99.99% Muslims, both girls and boys, could be an ideal platform, at least in Mumbai. And I can my management is also sitting over here and he agrees with that. So I definitely, my suggestion is a curriculum should be developed and we can start it at an earlier age so that we are able to mold our girls and boys towards having a good partner, how to become a good partner. अगर वाइफ है या हस्बैंड है, हाउ टू बिकम अ गुड पार्टनर, ये वैल्यू एजुकेशन में आना चाहिए। हमारी वैल्यू एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो गई है। यस, माय मैनेजमेंट, We are giving platform. I said we have 4,000 students in the college from 11 to from PhD. तो हम लोग चाहेंगे कि अगर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, हम ये प्लेटफॉर्म रखना चाहेंगे। We can offer this and at an how earlier age. Thank you. Training. Are they trained people, and how are they? How well qualified are they? Because this is not going to be easy. You need to have. Need to keep in mind years of experience and proper kind of training. So I'm more concerned about who are the people who are going to do this, who are going to conduct this training. तो यही कि हम तो मस्जिद में करते ही थे, हम अपने लेवल पर करते ही हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। Now you are asking who is going to doing,
तो हम ये चाह रहे हैं कि ये एक सेटअप हो, उस सेटअप पर ऑनलाइन या 1-to-1 हमारे पास ऐसे हमारे नॉलेज में ऐसे लोग हो, जैसे कल हम परसों बैठे थे तो आसिया शेख एक काउंसलर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास लिस्ट है मुस्लिम काउंसलर, नॉन मुस्लिम काउंसलर, कौन कौन से हमको इसमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि काउंसलिंग का साइड ऐसा है कि अगर काउंसलर सही नहीं होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमको ये अंदाज़ा है कि बहुत नाजुक और बहुत ही अहम, जितना अहम है, जैसे बहुत सारे अब आप कह रहे हैं कि अहम है, करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर, उसका एक डिज़ाइन ऐसे बने जिसमें रिजल्ट हमको पॉजिटिव आए, न ये कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि वो करने के बाद पता चले कि ये मुनासिब नहीं था और फिर उसको शट डाउन किया। बॉम्बे में ऐसे कोर्सेज करवाते हैं, काउंसलिंग कोर्सेज, एंड दे आर अलाउड टू कॉल देमसेल्व्स काउंसलर्स। तो वो लोग अपना सेटअप करके स्टार्ट कर लेते हैं कहीं भी, कॉलेज में, स्कूल्स में और कहीं भी। तो इट इज़ वेरी डैमेजिंग बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सो इमेच्योर। तो कोई ब्रांड के अंदर या ऐसे कोई सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट हु यू So there are quacks and then there are qualified quacks. So we need to differentiate both and not hire either one of them. Yes, yes. So probably that's where so many beautiful ideas that are coming. But you see, you have to make a start somewhere, and many times we wait for the ideal situation to come. That ideal situation is never going to come. It's like saying someone that you are trying to learn to swim outside the water. You're never going to learn to swim outside the water. You need to get into the water, and then obviously you build your confidence as you go. And all great things begins with humble beginnings. I think there needs to be a start. I mean, there is enough ideas that have come in, and there is an aspect of care. That's one of the things I think we need to start. There's also the aspect of a marital course that has been presented. Perhaps one of the ways that I could suggest as an outsider, I can't, impose upon this, but I think maybe what needs to be done is maybe people from very different backgrounds. So you have people who've got the background of counseling, those who've got the Shari backing, those who've got maybe psychology, etc., clinical psychology or anything, get together to be able to understand what type of course they would like to give and what is the subject matter that they are going to emphasize. So even if you just get 1 or 2 meetings to be able to start off the aspect of that Maharashtra, what is it that the college? So maybe you can start off with that. Here you got an opportunity to start off. Once you start off, you build confidence. And until you don't start off, you can have many theories. What actually happens is sometimes when you have meetings after meetings to start off something and it doesn't get started, then what actually happens is people become despondent. People say, now we're just tired of meetings. And if there is something that happens, that everyone becomes more confident, and it inspires confidence. So I think maybe that may be an aspect to start off something, start it off small, start it off with humble beginnings. Here you have an opportunity, don't lose that opportunity. According to what it is, you have got so many students, Muslim students, sit down, have a small group, and maybe able to agree upon the background, or maybe agree upon what you are going to emphasize and what you are going to put forward with varied backgrounds of people who will be able to give that course. Maybe that's my idea. Yes, in today's time, there is absolutely no doubt, not only in India, in South Africa, the world. The aspect is girls are outdoing boys, especially in the educational field, and they are doing much better. They are the ones who seem to be showing more promise and more initiative in many things. Now, in an ideal situation, the men are looking upon that as a threat. We look at our beloved Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. When he saw the enthusiasm of Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha with regard to her superlative knowledge, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam never stifled it. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam actually gave it even more credence. Actually, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam helped her with regard to even furthering her development and her knowledge. And a time came, the Sahaba said, we never ever had any query with regard to the Quran and Hadith that we didn't get a suitable answer from Hazrat Aisha radiallahu ta'ala. That came because of the training. The problem is, and I think brother made mention with regard to this, that we look at the role of women and men and women as conflicting, as contradictory. In fact, Allah has created a situation that the role of men and women is supposed to be complementary. Now, if both the men and the woman take advantage from the unique abilities Allah has given them,
then you would have not only a happy marital life, you will have actually a remarkable society, because there are certain types of qualities that Allah subhanahu wa ta'ala has given men that perhaps females won't be able to have, and similarly vice versa. So I think we have to look at the role of men and women instead of looking at it as something that is conflicting. Let us start looking at it as complementary, not only in the home, but also in the broader family and the broader community. We will be able to achieve much more. So I will just conclude with that. I don't know if there's anything else that anyone else want to bring. And the hottest topic going around is on triple talaq ordinance, and also what they wanted to do was essentially educate women about talaq-e-tafweez. Okay, now I explained to them that Islam has given you a right, okay, which is talaq-e-tafweez, but there are certain conditions and grounds wherein you can actually exercise that. Rather than educating people on what talaq-e-tafweez is, which is called as prenup agreements, which are not enforceable in India any which ways, but though under nikah, I mean as per Muslims it would be. So I said, rather than doing that, mainly people should first understand that there is no one yardstick for everything. So suppose if a woman has a right of talaq-e-tafweez, that doesn't mean कि कुछ भी हो जाएगा मैं उसको exercise कर दूँगी. So first is we do not have that knowledge. I said to get to the base. The base is first understand the sources of Islam. Secondly, understand the types of talaq, okay, wherein if you ask people today, they actually don't know anything about it. People are talking about polygamy. They do not know, okay, this is a right with an obligation or with a restriction to it. So the more important content should be is that there is no one yardstick. So every time if you're doing a counseling factor, maybe you might have certain overlapping factors, but that cannot be taken as one gospel truth. And we have to keep working, because these are individuals, and as pointed out by respective doctors, that human beings have a complex mind, too much complexity. So taking into account the situations, we have to actually guide people. So that should be the key to this course, and this will lead to success. Explore the possibilities of how we can use technology. The counselors and the psychologists can throw light on this. Alright, so what I suggest is, I would request every one of you, and maybe you can start with Arfat Bhai over here. What is it that you can do to contribute to this movement? How can you contribute? So from here on until conclusion in the next 5 minutes, that's all we'll hear from you. How can you individually contribute? Make them realize. Once you make them realize, they will hesitate to go for. And see that तलाक जो है अल्लाह को नाराज करने का सबसे अल्लाह सबसे जाती नाराज जो है तलाक से होता है. Make them realize this. Yes. Yes, sir. Yeah, so action points. I am trained to design those manuals, training manuals on these questions, what is fundamental to human relationships. So I can be a contributor in designing the course curriculum inside of what is fundamental to human relationships. All right. Any kind of, as I said, I'm specializing in Muslim personal law, where we try to create a balance between the law of the land, which is civil law, and personal law, so that there is enforceability of the contract or whatever documentation we are doing. So Google Forms. We have everybody's email address. If we can make a Google Doc where everybody contributes their thought in a few points, no paragraphs, and if we can then pull up all of this before any next meeting we have, I think we have something to start with. That's a good idea. Yeah. We are all around. The shuyukh are over here. So before dinner, after dinner, during dinner, you can definitely get in touch with them. Brother Aziz is the central coordinator. He's noting down the points, so you can give your suggestions, and as well as what you can do, how you can contribute. You can go up to him, let him know, let Nikhat know. Sister Masira is noting down amongst the ladies, so you can let her know. So that way we can quickly take this forward, and in due course expect a form very soon from us. I can help in designing this app, because I'm running a company. So later on I can discuss this with Mufti sir, inshallah. Or I suggest there should be one small forum for this particular event, where everyone can contribute and comment on certain points, where somewhere some points should be thrown
and that point should be conclude on something. It should not be like that should be forums are more likely to become fights between people. It should not be like that, and I suggest there should be solution, because whole of this idea, what I think from my side, that rather than doing a postmortem, we should do operation. Okay, thank you. माशाअल्लाह, ये एक अमर की तरफ इशारा करें, जैसे अरफात ने कहा, आपने भी कहा। 3 साल से हमारे जहन में एक आइडिया है, इसमें आप सोच सकते हैं, यानी इससे आप अपनी आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। यू कैन सेंड अस द ईमेल्स एंड ऑल। हमने सोचा कि एक कॉफ़ी टेबल बुक होनी चाहिए कपल्स के लिए, न्यू मैरिड कपल्स को आप गिफ्ट करते हैं, उसमें ये एक गिफ्ट हो। और उस गिफ्ट के लिए मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर से कांटेक्ट किया, उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। कुछ कुरान की आयतें हैं और कुछ हदीसें हैं, अगर सिर्फ बहुत अच्छे से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ शादी से पहले उसके पैगाम को, उसकी हकीकत को समझ लें तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लेकिन जाहिर बात है कि वो मुश्किल होता है। हमने उसमें सोचा कि कुरान की एक आयत, जैसे सूरह रूम की 21 आयत है, वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये आयत है, ये आयत का ट्रांसलेशन होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन। उसके बाद चूँकि मैरिटल पर बहुत सारी बुक्स हैं और कपल्स के पास टाइम नहीं होता बुक्स पूरी पढ़ने के लिए, सिर्फ आयत उसका ट्रांसलेशन, सिर्फ हदीस उसका ट्रांसलेशन। लेकिन डिजाइनर का काम क्या होगा, उस आयत के पीछे, उस आयत का एक होता है इमेज, तस्वीर, एक होती है इमेजिनेशन, उसका तसव्वुर और तस्वीर में बहुत फर्क है। आप उस आयत का तसव्वुर पेश करें कि उस आयत का जो पैगाम है वो आपके डिज़ाइन में महसूस हो। जैसे एक हदीस है, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह। जिस किसी वाइफ का इस हालत में इंतकाल हो कि उसके शौहर उससे राज़ी हैं तो वो जन्नत में चली जाएगी, जन्नत में दाखिल हो जाएगी। उलमा कहते हैं कि वाइफ के लिए, औरतों के लिए बहुत शॉर्टकट जन्नत में जाने का रास्ता ये है कि अपने फ़राइज़ करें और अपने हस्बैंड को खुश रखें। अब ये एक कॉन्सेप्ट, ये जाहिर बात है। दूसरी तरफ रिफ़्क़न बिल क़वारीर हदीस में है कि अंजशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रिफ़्क़न बिल क़वारीर। सफ़र कर रहे थे, वो हुदी पढ़ते थे जिससे ऊँट बहुत तेज़ी से भागते थे, वो लंबा किस्सा है, सुनाना नहीं चाहता। उसमें ये कहा रिफ़्क़न बिल क़वारीर, कि क़वारीर के साथ नरमी करो। क़वारीर वो ख़वातीन, वो लेडीज़, वो औरतें जो महदब के अंदर, जो ऊँट के ऊपर जो पालान होता है उसके अंदर होती है। क़वारीर असल में अरबी का वो लफ्ज़ है जिसके एक्चुअल लुग़त में माने हैं वो बर्तन जो शीशे से बना हो और उसके ऊपर डिज़ाइन हो, शीशे से बने हुए डिज़ाइन। आमतौर पर उस बर्तनों को हम में रखते हैं अपने शोकेस में और ईद के लिए निकालते हैं, बहुत एहतमाम से धोते हैं, फिर उसमें शीर खुरमा पिलाते हैं, फिर फ़ौरन उसको धोकर वापस काम वाली के पास नहीं देते। तो जिस तरीके से आप क़वारीर एक बर्तन के साथ ख्याल रखते हो, उससे ज़्यादा आपको अपनी घरवालियों के साथ ख्याल रखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर शौहर को पहले दिन से समझ में आए और दूसरी तरफ का अय्युम इम्रातिन वाला कॉन्सेप्ट अगर औरत को समझ में आए तो ये ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। ये डिज़ाइनिंग के लाइन्स है। ऐसे आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, आपके जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा तो मुझे जहन में आया कि हमारे 2 दिन के या 1 दिन के कोर्स में एक स्लाउट या एक सेशन होगा, जो मैंने अभी सोचा, मैंने लिखा कि मेल ब्रेन एंड फीमेल ब्रेन, दोनों के ब्रेन का पूरा तस्वुर अगर शादी से पहले आ जाए तो आदमी समझ सकता है कि सोचती कैसी है और मैं कैसे सोचती हूँ। Jazakallah khair for spending your time with us and for your valuable feedback, and inshallah we look forward to hear from you more often. And Dr. Saab, we are sending out that form very soon. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمالها
بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم